Hello and welcome back to Grey Beyond Narratives, the channel where we delve deep into the complexities of global issues, exploring the layers beneath the surface. Today will be our last session about Khalistan movement, a topic of immense complexity and historical significance. We will be navigating the intricate web of diplomatic relations, historical context, and internal conflicts that have shaped and continued to influence the Khalistan movement in this session. The diplomatic landscape of Canada, India, and Pakistan, and the current diplomatic situation between Canada and India, as well as the complex role Pakistan plays in the Khalistan movement. We will revisit the Raja Ranjit Singh Empire era, digging deeper into the historical roots of Khalistan and compare historical boundaries to the modern Khalistan map, particularly Pakistan's the internal conflict within the Khalistan movement, focusing on the ideological rifts and their consequences, and Banda Bahadur, a pivotal figure in Sikh history, and his impact on the movement's various factions. We're also going to discuss the ethnocentric alliances within the Khalistan movement, looking specifically at Sanja Punjab, a term rich in historical and socio-political implications, how these different groups' interests intersect, what motivate these ethnocentric alliances, and how do they affect the separatist movement. In the end, we will examine India and Pakistan's current positions on the Khalistan movement, deciphering recent policy changes and development. In latest news, India has told Canada it must remove 41 diplomats from its embassy in Delhi in the coming week, reducing the number to 21. We will also be discussing this incident in this session. Today we have our usual speakers with us: Furkan Ahmed, Shaji Sir Siddiqui, Aditya Matoria, and of course myself. Over to Aditya Matoria to begin the discussion. Aditya? Yeah, so the latest we are hearing about India and Canada's row is India asking Canada to remove, I believe it was 41 diplomats from its India's mission. So the idea behind it is that India wants a parity with the diplomats India has in Canada, but it's not as simple as we believe or we see it as, because the idea behind it is very pointed, and the idea is to somehow remind Canada that Canada needs India more than India needs Canada. So the idea behind it is to somehow try to tell Canada that the number of students who study in Canada's universities or yearly pay billions of dollars in like the money that is transferred to Canada for these students who are studying in Canadian colleges and universities is massive, and a country which whose population is shrinking on a year to year basis, and the only way they can keep the economy afloat and grow the size of the economy is by importing more students and new workers in the country. So according to 2020 survey, around 35 to 40% of the new students that arrive in Canada are of Indian origin. So India contributes to a large chunk of the students that reach Canada, like almost 40% of the visas and even the green cards or the passports allocated in the last like 5 years, like more than one third of them goes to the Indians. So the idea behind it is that if India can force Canada into believing that India can stop this massive number of students from trying to enter Canada and their workforce, it will for sure hamper the growth prospects of Canada. So
the idea behind removing, like, it's like, I believe there are around 50 to 55 diplomats who are Canadian who are working in India, and India is asking to remove 41 of them. So it's like removing 80% of the diplomats of Canada from India are asked to leave India, and I believe they are leaving for Singapore and Malaysia, if I'm not wrong. So the idea behind it is to completely choke the foreign nationals or the students who reach Canada, and in somehow in this way try to hamper the foreign investment or the growth prospects that comes through India to Canada. I don't know how successful it will be, but that is the idea behind this latest step taken by the Indian government. It's a strategy. It's a play. Let's see if India can pull this out off, But can I but ask you a question? only So time will tell. yeah, don't you think that majority of the people who are going to be affected on both sides are going to be people of Indian origin? Because point number one being majority of people who are overseas Canadians, a minority of them might be Khalistan supporters, but overwhelming number of them happen to be normal Indian NRIs, as well as Indian students who haven't acquired the Canadian nationality. So when diplomacy goes completely disarray, like it has done in this situation, don't you think when it's going to cause an issue for vast majority of Indians trying to go within India or trying to go back home, or if they are visiting India and they happen to have a connection with Canada, they're the ones who are going to be using those facilities in those embassies. Because let's be honest, majority of the Caucasian, or I would not say indigenous, but majority of Canadians who happen to be white or non-ethnically Indian or ethnically not Indian are basically not even visiting India apart from holidays, or it's not the other way around. So don't you think India is very directly affecting its own people? So yeah, the first point to make about non, like, non South Asians, like, the simpler term will be non South Asians who are applying to visit India, uh, per year has to be not more than, like, some thousand in has to be into, like, some thousands or couple of thousand people who visit India each year. It can't be more than that, like, from last estimates there are specific numbers I don't have currently in my mind, but it's like, not more than 20 to 40,000, like, people not of South Asian origin who visit India, of Canada's, like, passport holders of Canada. So that is true, but the other thing that you need to remember in India's case is that, Indians of, like, the people of Indian origin are not the people who can apply for a, like, India doesn't allow dual nationality, but it gives, like, people of Indian origin a special privilege, which is called OCI cards. Like, these are the cards issued to, like, people of Indian origin who have migrated to, like, foreign countries but has Indian heritage. So they can apply for a OCI card, and OCI card allows them to, like, visit India for long durations. They can, like, accept voting in India, and, like, buying agricultural land. It almost gives you all the rights of a normal citizen to, like, to do in India. So like, people of the Indian origin can I don't know exactly, like, how the visa process is, but I believe it's much more easier, and, like, it's not that difficult for OCI card. So yes, there will be no doubt there will be problems related to it,
but it won't be as difficult for the people of Indian origin. Yes, like new students who want to go and study in Canada, it will become more difficult for them to go to Canada and study in Canada. But I think that's the idea behind it, to discourage more students, more and more students to choose Canada for their studies, but diversify their options, or probably go to other countries for their studies, probably similar like uh, f- similar countries where the level of education, or to get a foreign passport in a first world country, which speaks English. You also have like other options, like No, in but my mind are like that's just Australia or New Zealand or Aditya. England. Yeah. Aditya, sorry to cut you. But the thing is, you're conversing about probably future students. What about the people who already reside in Canada or have connections to both countries? Don't you So think I just they said that already you have the exist in OCI vast cards. numbers? Hmm. Yeah, so you get OCI cards, and almost all the Indians of who are living in these foreign countries, they already have these OCI cards. It's not a new phenomena. OCI cards have Yes. existed So, since are you decades. basically suggesting that people who have those cards, it's not a problem for them? Not a big problem, but of course, it will be more problem than it was before, but not a huge problem. But at the end of the day, Like, what is being publicized and what's coming to light is that even majority of the Khalistanis or people who support Khalistan happen to have those cards as well, and this is kind of stopping them from entering within India as well. But that how do you distinguish between the two then? Because that's not like you can distinguish outrightly that this person is ethnically someone else, and he's also carrying that card. So how does this work? so Do you have any so idea? OCI, unlike a citizenship, is not a right. It's a privilege that a country gives you. For example, if you are an Indian national, even if you like him or her or not, you still have to allow them to enter your country, and you have a lot of responsibility when for example, even American like Daniel Pearl was killed in Pakistan or abducted, whatever, even he was doing something illegal. Still, if he or she is your citizen of your country, it's your duty, moral duty, to to save them or to take care of them in a foreign land, because at the end of the day, they are your citizen, and it's a moral and duty of your country to protect your citizen. But OCI is like a privilege. It's a privilege given to the people of Indian origin. If you remember Salman Taseer, the child of Indian and a Pakistani Punjabi parent, tried to obtain or renew his OCI for India, and he was denied, because I don't remember exactly why he was denied his OCI, but he was denied his OCI because of some reasons. Because, and the argument given by the Indian state was that OCI is a privilege. It's not a right that you have. So But it I can think be withdrawn. in that case, the mother was a British citizen, if I'm not wrong. Yeah, so it And it doesn't matter in India. In India, Salman Taseer was a Pakistani yeah, so in citizen. India, it's you don't even have to be born in India or anything like that. If you have ancestry from India, you are eligible for OCI. It's India has right based on the birth base. If you have ancestry in India, even if you migrated like 4 generations ago or 7 generations ago, if your ancestry is from India, you are eligible to apply for OCI. And Aditya, if I may, OCI is an acronym which stands for क्या मतलब है इसका?
I think OCI is overseas. Indians. OCI is something. Let me. Uh, OCI meaning full form. Let me search. It's overseas citizenship of India. Overseas citizenship of India. Okay, thank you. It's not Yes, a it. full लेकिन आदित्य, citizenship. ये तो तुम तो ये बता रहे हो ना कि उनको जो भी है इंडिया के अंदर आने में प्रॉब्लम Yeah, नहीं so they होगी won't क्योंकि face a ओसीआई कार्ड problem है in उन्होंने entering India, but it's not, since it's not a right like a citizenship, it can be withdrawn also. Like, if India sees a lot of Khalistani movement, or people of sympathizing with Khalistan makes a ruckus, like, for example, outside an Indian embassy, for which India complained like some time ago, where they tried to take out, like, India's flag from the Indian embassy in UK. So India cancelled those people's OCI, and that because it's not a right, so India can do that. And anyways, being a Khalistani is not a crime in India. You can openly support Khalistan. You can talk about it. There was a case filed in India's courts where somebody asked that, is supporting Khalistan legal or illegal in India, and the judge ruled that, you can, like you know breaking India is not allowed, but asking for a separate homeland named Khalistan is legal. And we also have a member of parliament, interestingly, we have a member of parliament, Simranjeet Singh Maan, who's openly an advocate for Khalistan. He sits in India's parliament, in the same parliament where our prime minister speaks. So it's not that, surprising to be Khalistani and be allowed in India's parliament or our, democracy. So being Khalistani is not a crime, but doing something illegal or criminal, or making some kind of ruckus Aditya, I can lead you completely to understand that, cancellation and of your. you're not answerable. Aditya, I completely understand what you're saying, and you're not really answerable for that. But my main concern was, or what I was trying to highlight, was the fact that majority of the people who are affected, who are trying to get into India or might have association with India, are people of Indian origin, one way or another. At least 90% of them, and they're the ones in this whole diplomacy. Might not even majority of them are definitely not Khalistan supporters. Majority of them do not happen to be from India, sorry, from Punjab region. They do happen to be from India. They have cultural associations to India, and they're the ones who are basically facing these issues. So on either side, it's people who are of Indian origin who are seeing the bad side of this. So don't you think it's the onus is on the Indian government or anyone else in order to make the situation better for their own people? Because at the end of the day, this is not really punishing Canada in any way. Why aren't any trade deals being attacked? Why aren't there any Canadian companies being told to go away? Why aren't there any other associations which basically Canada and India negotiated with are not under scrutiny, where India is allying with Canada? Why only this aspect? I would understand this would be a very, very effective means of action if, for instance, the people trying to enter Canada were not, sorry, people trying to enter India were not people of Indian origin. But in majority, it's them who are being affected, it's no one else besides them. And that's a so so very, very, very imperative point to see. so let me give you two interesting points here. If what I believe could be the, rationale behind it. The first point is, India is trying to hit Canada where it, hurts the most. So the first thing is that, India and Canada's trade is not very high. India and Canada barely trades. I can't name you like two companies of Canadian origin that functions in India. You have one
which is like barely present in India. That's like Tim Hortons coffee. Like that chain, India probably has like couple, not even a dozen of chains that are like currently functioning in India. I don't remember any second Canadian company that I can remember, that I can name here, that is functioning in India. The second, I think, like the main reason behind it is like what I believe, like the twofold idea behind it is that first of all, it directly will hurt Canada, because Canada desperately needs those students to like for their universities to function, for their entire like education ecosystems to function. And also Canada knows that these students eventually stay back in Canada and contribute into growing their economy, and like helping their old aging society, or keeping it afloat. So for first idea is that, and the second idea behind that is like according to me, or like an extended idea could be that to hurt the Punjabi diaspora into believing that because of the the ruckus the Khalistanis are making in Canada, it's directly affecting the students who are living in Indian Punjab, who want to migrate to Canada, and it's like somehow will affect them also. So to it So, will create some kind of like some so kind of Aditya, negative the feeling towards the Khalistani from Punjab. so That's just my for understanding. information, purposes, the trade between Canada and India is worth something in round about oh, 23 billion. Not only that, if you look at um yeah, so the products which are imported in India by from Canada, that consists of mineral products, paper goods, vegetable products, metals, chemical products, precious metals, and machines. Uh, from India to Canada, again, you've got chemicals, textiles, metals, you've got machines, vegetable products, plastics, food stuff, precious metals as well, and 6% other stuff, and 39% of Indian furniture is basically exported to Canada. Uh, so the point, 39% of the entire trade value. So why aren't any of these sectors uh, the ones where the embargoes are coming in? Why is it just affecting the normal people? It's not affecting the trade. This is not a small number in terms of entire trade, is it? Aditya? I think Shah, I don't think like India's idea behind like is to somehow try to sanction Canada. India knows Canada is a first world country. Canada's GDP per capita is like at least 20 times higher than that of India. So I don't believe India is in some kind of illusion that by stopping India's trade with Canada, somehow like it will weaken their economy. Canada's economy is already very strong. Like if anything, No, it no, will I hurt India completely more understand that, but it's not than it really will hurt hurting Canada. Canada. That's my point. It's not I really think this hurting action Canada. is And I would like to point out another thing. Those people of Canadian origin who did not ethnically, who don't happen to ethnically be Indian, when they basically go to India, they are usually tourists. So yeah, but again, since I they're discussed about the OCI, so if you have tourists. a The OCI reason card, why you I'm don't even saying, need a visa. yeah, my point is that tourists usually spend money in the country they go to. So the point over here is the only people this is actually at the end of the day affecting is just the people of Indian origin, no one else. No, it's not. Obviously, Khalistanis will face some scrutiny, but at large, it's majority of Indians, and this cannot be good for Hindu-Sikh relations.
or I disagree. let's not just say Hindu, but uh, Indian and uh, Khalistani or Sikh stroke Sikh relation. How do you differentiate between a Khalistani and a Sikh? It's put the Sikh community in a very, very difficult position. So I think we've exhausted this So topic. since like I Um, said, the idea behind it is that somehow blame this worsening of relationship on the behavior of the Khalistanis, so that the Indian Punjabis who live in India, who votes in India, somehow believe that we can't go to Canada because these Khalistanis are creating or making ruckus in Canada, and this is the reason why we are unable to go to Canada, and somehow try to malign the image of Khalistanis in the minds of the Punjabis who lives in India. Somehow blame the the problem on the Khalistanis for creating this mess, and believing that the Indian Punjabis who want to go to Canada will believe that we are not able to go to Canada because of the Khalistanis in Canada. You get my point? Yeah. Okay. We have a guest speaker, Madara. Madara, if you would like to add something, and yeah, Yeah, thank you. Surprisingly, I agree with everything Althea have said so far, but I have to add some things here. I mean, this has been going on between India and Canada for a very long time, since 1980s, even before the Kanishka bombing. That we were asking, we were like, quietly making some claims, and I'm absolutely sure that India did not give any enough evidence which will stand in a court of law in Canada to extradite these people. The problem right now is not about that at all. Since very long time, since 1980s, Is it Madara has it. breaking up, or is it my internet? no, no, Sorry, Madara, am I breaking we up? can. No, no, Madara, we can hear you. Aditya, we can hear Madara. Yeah. Yeah, So go ahead, it's Madara. like, I mean, Khalistanis, they exist everywhere. They exist in Australia. They exist in UK, USA, for example. Probably there are more Khalistanis living in USA than Canada. But what is very jarring about Canada is, like, they kind of able to find some kind of political space. So it's very, very difficult. Uh, like, it's very easy. Trudeau and Rishi Sunak came to the G20, but you only have to understand what Rishi Sunak said, even though he also has some allegations in his country about the people killing, Indian government killing some people, some Khalistanis in UK, or people arresting him, people arresting some Sikh people in like Khalistanis in India. With all the thing, he made a very good statement, which is very pro-India, which is very anti-Khalistani. So that's the kind of support, political support India is trying to get from Canada. But for some reason, I don't know what. I think it's kind of a stupidity. It was not even a stupidity. Maybe it's like maybe they Canada want to take a high road. For a long time, they did not think that India is a very big deal, so they can ride all over them. But not anymore. I don't think, not anymore. So look, if Trudeau did not came to this House of Parliament and make this open allegations against India, this Khalistani matter would have been very, very quiet under the rags. Because other than this issue, Khalistani issue, we absolutely have no problem with Canada. India has no problem with Canada. But just because of this, now it came out. Now India will make a very big deal out of this to show Canada, to make them change how they behave
when it comes to Khalistani problem, and when it comes to how they treat Indian government. Thank you, Madara. Karan has joined, and Karan, just for a brief recap, we were discussing basically Canada and Indian diplomatic updates and involvement. We didn't get to that part, but we were also hoping, and I would like Karan and Shah and Aditya to also comment on this, and other panelists on the involvement of Pakistan, which was probably in certain headlines this week. So, Karan, I would yeah, basically like to add something to what Madara basically said. So, Madara, when Rishi Sunak made that statement, that was predating uh, the whole India and Canada fiasco, if you understand. And the thing is, yeah, as far as the UK is concerned, it was kind of making a crackdown on Khalistani gangs and money laundering issues since the last 6 7 months. So that was more in line with or more in cohesion with that whole activity. When it's come to this Canadian stroke Indian diplomatic row, and the way it's proceeding, both United Kingdom and United States have been extremely quiet and silent. They haven't made many statements. And the statements which have come out from the British Foreign Office or even from America, in terms of what's been stated, it's more been towards telling India to comply with the Canadian authorities rather than taking outrightly Indian stance. So even though they've not outrightly gone out and made those statements that Canada is correct or we support Canada, they seem to be leaning towards Canada. And if you do understand the Five Eyes situation, in that whole entire situation, there's another aspect. Apparently it's the United States who went and informed Canadians of a supposed assassination carried out by the Indians on Canadian soil. So again, you see cohesion from the Americans from that side, and they haven't come out and denied that. And when Jay Shankar was questioned by one of the Indian journalists just 48 hours ago, his response that this is what Five Eyes and statements coming out from various authorities and various media houses are basically stating. Jay Shankar's response was that neither do I work for the FBI and neither do I work for Five Eyes. So I don't know what they're stating. So that was very Can I quickly so do answer you you? understand my point, Madara? I My absolutely point is understood we you. I can't yeah, really absolutely understood say you. that I they're absolutely understood you. Can I answer you? yeah, yeah, yeah. yeah. Madara, Let Madara, me just if you complete, can, and then we'll get a complete yeah, chance to okay. rebuttal. Uh, uh, so Madara, the reason I told you all this and I emphasized upon what I have is very simple, and it's that I see the leaning of United States as well as United Kingdoms more towards Canada at this stage than towards India. What do you say in regards to that? Go ahead. I mean, I don't actually see that at all. Like from my understanding, what I listen so much from Trudeau and the Canadian press is this, right? They have been in contact with the Indian government with this allegations since months. You know, before Trudeau came out to, sorry guys, I'm eating a pizza. Before Trudeau came out in public to make this allegations in the parliament, right? But I'm really sure that he has been in contact with all his five allies. New Zealand, Australia, they are worth nothing. When it comes to Five Eyes, USA is what matters.
So probably he got some kind of intelligence, some kind of some kind of knowledge from USA. I don't know, but what I have seen so far, after he made the allegation, no one really came out. USA, Australia, New Zealand, UK. UK actually completely rejected it, everything. Yeah, UK said, we are probably concerned, but we will go ahead with trade relationship with India, trade talks with India, free trade with India. And Australia and New Zealand, I don't really care. Australia, what they said is, it's concerning. It's concerning. And USA is the only country which said something important, that it said India has to cooperate with Canada to investigate. Now, actually, this is a very diplomatic statement. It like USA did not condemn India for doing this. I mean, presumably they were the only one. They are the ones who gave the intelligence evidence to Canada, right? To make that kind of allegation. But even USA did not say, okay, we condemn India, they should not do this again. We condemn Indian government. No, nothing like this. We are concerned about this. I mean, we and Canada are very close friends, blah, blah, blah. And, and in the next week, I see Jay Shankar Okay, talking to, Madara, no, no, can no, you wait, wait, I will. can you be brief, because like land the point, and then we have to move to other 30 seconds, speakers and 30 seconds. also Yeah, move okay. with the discussion as well. Yeah, Yeah, 30 thank you. seconds. Yeah. So then Jaishankar met Anthony Blinken, and he had a lot of conferences in USA. I don't get the feeling at all that USA is completely siding with Canada. If anything, USA does not care about this incident at all. Thank you. That's my Okay, point. okay, that might be your opinion. I think it's about time we moved on. Karan, what's your opinion? Welcome on the panel. What's your opinion on this entire fiasco? The 40. So the basic point was, what we were conversing on was that Canadians uh, being blocked by Indians is mostly affecting people of Indian origin. So it's not really affecting what you might call everyday Canadian. It's just affecting people Hmm. from that side, right? Carry on. Go ahead. Yeah, it's been affected. Yeah, definitely. Yeah, people Indian origin got affected in Canada, and most of them are like people. Those have most of them have जिनके पास इंडियन पासपोर्ट है या OCI कार्ड है उनको तो कोई टेंशन नहीं है. बट पीपल जो जिनके पास कैनेडियन सिटीजनशिप है उनके लिए है प्रॉब्लम. अब ये बात तो अब उनको अपने कनाडा के प्राइम मिनिस्टर से पूछनी चाहिए ना कि हाउ हाउ कम ही उसने ऐसे हाउ क्यों शुरुआत की. तो उसने बिगिनिंग की थी, तो उसका फिर इंडिया ने रिएक्शन किया. एंड जैसे रिकॉर्पोरेशन होते हैं लाइक फॉर एवरी एक्शन यू हैव अ रिएक्शन. तो ऐसा ही उसका जवाब है. अब अगर उनको लगता है कि लाइक नाउ आई थिंक ट्रूडो वाज आस्किंग कि वो कह रहा था कि मैंने कुछ प्राइवेट में बात करनी है. इट्स अ डिप्लोमेटिक थिंग जहां तक मेरा ख्याल है. और मेरे को लगता नहीं कि इंडिया गोना लूज लाइक स्लीप्स कि इंडिया कनाडा के साथ रिलेशन नहीं है या कनाडा लाइक दे लीविंग इट और लाइक कनाडा इज इट्स नॉट वेरी इफेक्टिव इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एनीवे. उनका कुछ इतना खास इम्पैक्ट तो है नहीं है. हाँ, रही बात लाइक अगर उनको डिप्लोमेट जो मैटर्स है अगर वो सोल्व करने हैं तो वो अपना एविडेंस दे दें तो उससे बात फिर खत्म हो जाएगी. बट अभी तक कोई ऐसा एविडेंस तो मिला नहीं है. एंड आई थिंक इट्स ऑनगोइंग थिंग. इंडिया ने उनके डिप्लोमेट्स को निकाल दिया है शायद कनाडा से बाहर लाइक 41 और समथिंग. तो वो चले गए हैं कहीं मलेशिया वगैरह कालालंपुर और समथिंग. बट अगेन लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन. इट्स इंटरेस्टिंग थिंग टू ऑब्जर्व. देखते हैं आगे क्या होता है.
Yeah, thank you, Karan. And I think we should move on to the next section of the discussion. And the next section was मैं थोड़ा सा bilingual हूँगा क्योंकि I think we need to uh, also कुछ थोड़ा और भी ऑडियंस को एंगेज करना चाहिए. सांझा पंजाब और जो एथनोसेंट्रिक इनकी अलायंसेस हैं, and I would go straight to Sid. Sid, start the conversation, and I think you know what we are talking about, और जी जिन points पे मेरा ख्याल है थोड़ा सा like you would highlight on is uh, like uh, define basically what Sanja Punjab is, if you can, and basically its significance in the context of like ethnocentric जो alliances हैं, and also try to discuss the basic impact of various groups such as जो हमने last time या उससे last time discuss किए थे and separatist movements को भी जरा touch कीजिएगा. जी please go ahead. जी बिल्कुल मैं इसके ऊपर डिस्कशन करता हूँ. सांझा पंजाब क्या है? आई वुड लाइक टू बिकॉज आई लव माय स्क्रीन शेयर माय स्क्रीन विद यू. जी ये है सांझा पंजाब जिसके बारे में डिस्कशन करना चाह रहे हैं. द खालिस्तान रीजन as you can see as Lahore in its mid which they consider to be the capital of Khalistan. वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों के जो से हैं पंजाब उनको मिक्स करके उनको कंबाइन करके तो सांझे का मतलब यही है कि एक जो सा कंबाइन कर देना. तो सांझा पंजाब का आइडेंटिटी बेसिकली ये है. मसला यहाँ पे ये आता है इन रिगार्ड्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सांझा पंजाब के दरमियान में एक बहुत बड़ा बॉर्डर है एंड दैट बॉर्डर हैज़ अ हिस्ट्री एंड अ ब्लडी वन. वो जो खालिस्तानी मूवमेंट के जो प्रमोटर्स हैं या जो लोग इंडिया वाली साइड में जो खालिस्तान को के अंदर बिलीव करते हैं ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर एक्चुअली क्योंकि यहाँ पे तो मुसलमान है 90%, 96% ऑफ द पॉपुलेशन इज मुस्लिम. दे हैव नो से, दे आर blatantly going to be against that concept. लेकिन खालिस्तानियों के जो आइडिया है वो तो 80% ऑफ द पंजाब इज इन पाकिस्तान, तो उनका खालिस्तान कहाँ से आएगा? 80% ऑफ इट इज गोइंग टू कम फ्रॉम पाकिस्तान और वो तो होने से रहा. उसके लिए उन दे वुड रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ alliance within Pakistan. Now, Khalistan is a theocratic concept, a concept of a theocratic country. एक मजहब के नाम पे, जिस तरह पाकिस्तान एक मजहब के नाम पे मुल्क लिया गया है, खालिस्तान भी टेक्निकली एक सिख मजहब के नाम पे अलहदा मुल्क अलहदा जो सा करने की कोशिश की जाएगी. वो यहाँ पे कार्ड सेल आउट नहीं हो सकता पाकिस्तान के अंदर. We are very staunch about it. We are very staunch in regards to religion. तो यहाँ पे उसको ट्रांसलेट करने के लिए उनको फिर कौमियत के ऊपर आना पड़ता है, नस्ल परस्ती के ऊपर आना पड़ता है, उनको एथनोसेंट्रिसिटी के ऊपर आना पड़ता है कि यहाँ पे पंजाबियत उजागर करने के लिए जो उनसे लोग पंजाबियत के अंदर यानी कि एक कौमी पॉलिटिक्स के ऊपर यकीन रखते हैं इन रिगार्ड्स टू एथनिसिटी, उन उस रिसोर्स को वो लोग टैप करेंगे एंड दे विल मेक नेचुरल अलायंसेस विद देम. मामला ये है कि खालिस्तान जो कि एक सिख पॉपुलेशन है, सिख थियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है. इंडियन पंजाब के अंदर द 56 या 57% ऑफ द पॉपुलेशन इज सिख, रेस्ट इज मुस्लिम्स एंड हिंदूज एंड क्रिश्चियंस. वो 30 बिलियन कुछ उनकी तादाद है. पाकिस्तान वाली साइड पे 96% ऑफ द पॉपुलेशन इज मुस्लिम एंड वी आर 130 बिलियन आई गेस, 130 120. उस कॉन्सेप्ट को जब आप फ्यूचर में देखते हैं कि उसकी फॉर्मेशन किस तरह होगी, इट्स गोइंग टू बी एट मोस्ट 10% माइनॉरिटी
ruling the other 90% of the people. That is what they are conceptualizing. और उस चीज़ को टैप इन करने के लिए पाकिस्तानी पॉपुलेशन के अंदर वो एथनोसेंट्रिसिटी, कौमियत परस्ती, नस्ल परस्ती के ऊपर जाएंगे कि जी पंजाबियत के ऊपर बात करें, पंजाब के और पंजाबी लोगों के बारे में आप लोग बात करें। अ, हमारे पास एक ऑलरेडी आइडेंटिटी स्ट्रक्चर यहाँ पे मौजूद है, उसको ब्रेक अपार्ट करके अपने नैरेटिव को प्रमोट करने के लिए उस चीज को पुश करने की लोग कोशिश करेंगे। मुझे पंजाब की रीजनल पॉलिटिक्स के अंदर मुझे ये नजर आता है कि यहाँ पे कौमियत परस्ती, नस्ल परस्ती को पुश करने का मकसद ये हो सकता है कि in the future, if they have any possibility of making Khalistan, they will rip apart the most strongest region of Pakistan. अब आप ये सोचे ना फुरकान भाई कि लेट्स सपोज कि इंडिया के अंदर बाय सम स्ट्रोक ऑफ लक, बाय सम whether by a military coup or by some political methodology, I do not know how, वो खालिस्तान एग्जिस्टेंस में आ जाता है सिर्फ इंडिया के अंदर। Now, what exactly is stopping India from pushing that particular region from attacking Pakistan? ओके क्योंकि सो फुरकान फिर भाई, द प्रोपोजिशन और जो मैं समझा हूँ वो ये है, इन टुडेज डे एंड एज certain group of people are fantasizing of colonizing a majority province of a certain ethnicity या religious background के साथ। तो ये colonize करने का सोच रहे हैं हमें। मैं straight question पूछूंगा, like is it like a dream of colonizing the Muslims जो कि इधर रह रहे हैं, uh, जो in a long खालिस्तानीज हैं? stretch that is, yeah, in a long stretch, but मैं ये नहीं कहूँगा कि right now हम्म, they know very well we are not going to give them an inch. हमने इंडिया को इंच नहीं दिया, हम इनको जो सा कोई मिलीमीटर भी नहीं देंगे। नहीं देंगे। लेकिन एट द फ्यूचर उनके जो इन द लॉन्ग, जिस वक्त कहते हैं ना कि दूरंदेशी होनी चाहिए, that is just a natural repercussion of that particular scenario. एक एंड दफा बंद सिर्फ हो जाता है इस पॉइंट पे मैं एक और चीज कहूंगा, इंडिया ने भी 1 इंच नहीं दिया ऑफ द पंजाब जो कि सेग्रीगेट हुआ था ड्यूरिंग पार्टीशन। we both are nuclear states with huge defense forces फुरकान भाई, and वो जो उनसे चीज है दोनों ना, ने नहीं दिया। तो जो अगर उधर भी एक इमेजिनरी सिचुएशन अगर हम खींचे कि वो दे देंगे, वो लाइक इट्स स्टिल अ लॉन्ग स्ट्रेच एंड आई वुड स्टिल कंसिडर इट एज अ फैंटेसी जिसमें वो कहेंगे कि वो इंडिया भी उन्हें स्टेट देगा, क्योंकि इन पंजाब आई थिंक देन अगेन उनकी पॉलिटिक्स इतनी सिंपल नहीं है, इट्स वेरी डाइवर्स एंड अ बिट कॉम्प्लेक्स कि ये कोई खालिस्तान और बना सुनो, ले अपना उधर। इसके अंदर ना, इधर इसके अंदर इधर काफी ज्यादा इधर तो फैक्टर्स आ इधर जाते हैं। टुवर्ड्स आवर साइड ऑफ द बॉर्डर इट्स वेरी विशफुल। जी शाह जी। जी, आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट कि ये थोड़ा सा मुश्किल तो है, लेकिन आपको इस तरह के एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर who are endorsing this, and I think it's imperative कि उन लोगों को हाईलाइट करने की ज़रूरत है कि वो कौन से ग्रुप्स हैं, वो कौन लोग हैं, what is in their what is in it for them, उनको क्या नज़र आता है और उसका क्या फ़ायदा है। इसके ऊपर सेट अगर थोड़ी बात करें तो जी हाँ, आई एग्री सेट। ये जो हमने अभी तक हमारी नज़रों से गुजरे हैं, जो ग्रुप्स जो कि सांझा पंजाब के आइडिया को या फिर खालिस्तान के आइडिया को बेहतर समझेंगे, अपने हक में दे वुड लाइक इट। एक तो पाकिस्तान के अंदर कादियानी, दूसरा जो यहाँ पे दहरिए बेसिकली एथियस्ट ग्रुप जोन से हैं यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं,
रहे हैं यहाँ पे, जो लोग एथियस्टिक काइंड ऑफ आइडियोलॉजी रखते हैं, naturally it is going to be, they are going to be in favor of it. अब पाकिस्तान के अंदर एथियस्ट ग्रुप्स जो से अब not so very powerful, they are individuals, they are not a group, and वो किस वजह से करेंगे, क्योंकि अब वो एक रिलीजियस आइडेंटिटी को तो कंप्लीटली फॉरसेक कर चुके हैं, एंड इट इज ओनली अ ह्यूमन नीड टू लुक फॉर एन आइडेंटिटी. अब उन्होंने आइडेंटिटी कहाँ पे ढूंढनी है, वो देखेंगे अभी लैंग्वेज के अंदर उसको ढूंढेंगे, उसको अपनी एथनिसिटी के अंदर ढूंढेंगे. इट इज अ ह्यूमन नीड टू लुक फॉर एन आइडेंटिटी बिकॉज वी आर सोशल एनिमल्स. उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप की एग्जिस्टेंस को वैलिडेट करने के लिए जाना है. व्हाट इज द easiest modus for finding a validation as a group? If you are in Punjab, कि भाई हम पंजाबी पहले हैं या हमने अपनी पंजाबियत करनी है, एथियस्ट इस वजह से जो उनसे हैं उसकी तरफ जाते हैं. दूसरा जो ग्रुप है, इट इज नॉट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, इट इज अ वेल नोन, वेल एस्टेब्लिश्ड एंड वेल डिफाइंड ग्रुप इन पाकिस्तान, एंड दे आर द कादियानीज. कादियानियों की जो सी दो सबसे इंपॉर्टेंट सिटीज हैं वो हैं, एक रबवा पाकिस्तान में, दूसरा कादियान वो है इंडिया में. और जो खालिस्तान का मैप मैंने आपको थोड़ी देर पहले शो किया था, द प्रपोज्ड मैप, वो दोनों उसके अंदर आते हैं. अब मजेदारी वाली बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर दे आर लीगली नॉट मुस्लिम्स. It is illegal for Qadianis to consider themselves or call themselves Muslim in Pakistan, and for good measure. We made sure of that. They are not Muslims. लेकिन खालिस्तान के अंदर वो मुसलमान होंगे. They would be defined as Muslims. उनको पाकिस्तान में इस्लाम नहीं मिला, उनको खालिस्तान में इस्लाम मिला. I think we are digressing from the topic. Yeah. Okay. So I would move to Karan. Karan, if you have any comments on Sanja Punjab and Yeah, I pretty much agree. मैं काफी हद तक सिद्ध से एग्री करता हूँ, क्योंकि बात क्या है कि जब उनको नहीं, काफी हद तक हाँ, ही इज राइट, कि उनको लगता है कि जब रिलीजन खत्म हो गया तो फिर देयर इज नथिंग लाइक स्टॉपिंग अस टू बी टुगेदर. एंड तो ज्यादातर, क्योंकि जहां तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है, वो जितने भी सिख हैं, इट्स माय प्योरली, आई एम नॉट सेइंग इट एनी पैनलिस्ट ऑन दिस पैनल जो उनकी विचार हो, मैं तो मानता हूँ कि सिख मोस्ट ऑफ देम आर एथियस्ट, इज एथियस्ट आइडिया. They don't have any idea of any divine, they don't have any idea of any life after death or anything. उनको पता ही, उनका कोई लेना देना नहीं इस चीज से नहीं है. उनको ये है कि कोई भी चीज हमें सपोर्ट करे, कोई भी बंदा कर दे, तो वो हमारे माई बाप है. तो उसमें कई पाकिस्तान से पंजाबी होते हैं लोग जो अपना प्यार, अपना भाईचारा, ये है वो है, फलाना धमकाना करते हैं. एंड बट से ये भी हो सकता है कि दे ट्राइंग टू इम्प्रेस कि हाँ जी आप और इंडियन स्टेट के गेस्ट हो, क्योंकि हम आपको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ओपनली तो किसी ने कुछ ऐसे कहा नहीं है. एंड तो ये भी करण भाई, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है. हाँ जी. आप जब ये कहते हैं कि सिक्स आर बेसिकली एथियस्ट, लेकिन दे सीम टू बी वेरी ट्राइबल. ना वो हिंदू बनना चाहते हैं, हालांकि हिंदूज यूज्ड टू कंसिडर देम टू बी अ पंथ. तो ना उनको कोई इनहेरेंटली उनके स्क्रिप्चर के अंदर और उनके बहुत सारों के जो ओपिनियंस हैं, दे आर एक्सट्रीमली एंटी मुस्लिम्स. And in terms of that, they have considered Muslims to be their historic enemies. तो इन चीज़ों के बारे में आप क्या, how would that justify? अगर for example Sanja Punjab, like they want, or some people in Pakistan are trying to negotiate, or are getting orgasms out of the thought of इसका किस तरीके से आपको क्या समझ आती है इसके अंदर कि how does that cohesion, what is in their mind, वो ये cohesion कैसे बना सकते हैं? शारी, उनका बस उनके दिमाग में एक चीज है कि हमारा किसी जमाने पे यहाँ पे इलाका हमारा होता था, हमारा राज होता था,
तो हमें वो राज वापस चाहिए, वो किसी भी कीमत पे हो, चाहे लाइक कोई कोई चाइना उनकी मदद कर दे, पाकिस्तान कर दे, नेटो कर दे, कनाडा कर दे, जो जो मर्जी कर दे, क्योंकि ओरिजिनली देखिए हम सब लाइक यू नो वी जहाँ यहाँ पे जितने आई डोंट नो अबाउट दिस गाय मदारा, पर जितने भी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं तो हमें तो इतनी चीज का तो सिंपल पता है ना कि जो जो इस्लाम है, इस्लाम में आफ्टर प्रॉफिट के बाद वो किसी को कुछ नहीं समझते हैं, सब मिट्टी है। मीन्स लाइक यू नो द लास्ट अथॉरिटी या जो सील है वो प्रॉफिट को ही मानते हैं। तो वो तो हमें सबको पता है, लाइक यू नो उसके बाद जो कोई आए हो, कोई संत हो या कोई बाबा हो या कोई पीर फकीर हो, उसको तो हमको सबको पता है कि कोई इतनी है ही नहीं वैल्यू या कुछ, मतलब मानते नहीं कुछ। वो इट्स अ पॉलिटिकल मसल, जिसे आप मान लीजिए कि वो कहते हैं कि आप भी हमारे जैसे ही है ना जी, तो हम एक हो जाते हैं। बट एक ये भी हो सकता है कि वो ये करने को करते हो पाकिस्तान साइड से कि वहां पे इतनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं इंडिया में, तो इनको प्रोवोक करो। वैसे भी ये लोग तो एथियस्ट ही है। मेरा एथियस्ट कहने का मतलब ये है कि क्योंकि ये लोग इनसे जो 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 बिलीवर्स होते हैं, जो रिलीजियस लोग होते हैं, उनका कोई किसी पे मान लीजिए कि मेनली जो रिलीजन्स दुनिया में डेवलप हुए हैं या जो है, उनका सबसे बड़ा जो बेस है ना वो लाइफ आफ्टर डेथ है, सबसे बड़ा बेस, अगर आप मान के चले। और उसके बाद डिवाइन, जिसको मतलब जैसे एक डिवाइन है या जो भी है तरीका है, उसको हर रिलीजन अपने तरीके से एक्सप्लेन करता है, पर इनका पता ही नहीं लगता कि डिवाइन है कि नहीं है, मरने के बाद क्या होगा नहीं होगा। नोबडी आंसर दैट चलो अपार्ट फ्रॉम करण भाई, मेरा ख्याल है थोड़ा सा ना रिलीजन पे कमेंट्स से। जस्ट हाँ, लास्ट थिंग। चले ठीक है। हाँ, दे ओनली जो जो चीज में ये बेस्ट है कि वो दूसरों में नुक्स निकालने में ये बेस्ट है। वो दूसरों को बता सकते हैं कि आप में गलत क्या है, बट दे फेल टू प्रीच देयर ओन आइडिया। तो उसमें उसमें पता ये लगता है कि इसका मतलब ये कि आप लाइक यू नो यू डोंट हैव एनी बिलीव और यू काइंड ऑफ एथियस्ट आइडिया। अब मैंने एक खालिस्तानी से सॉरी सिख से पूछ लिया, मैंने कहा जी मरने के बाद क्या होता है? वो कहता कुछ नहीं। मैं कहा तू मरा है? ये बात वही बंदा बताएगा ना जिसको इस चीज का एक्सपीरियंस होगा कि कुछ नहीं हुआ। तो मतलब ये तो मेरा करण पर्सनल भाई, एक्सपीरियंस है। रिलीजन से बाहर आके जरा से ड्रीम्स के अंदर जाते हैं हम। तो बेसिक आइडिया जो खालिस्तान को लेके है, वो जो पिक्चर ड्रॉ करते हैं वो महाराजा रंजीत सिंह की जो सा एम्पायर है उसको लेकर ड्रॉ करते हैं। तो अब हमने जब लास्ट टाइम चेक किया कि महाराजा रंजीत सिंह का जो सा एरा है और वहाँ पे कौन सा रीजन आता है, वो दैट इज मेजॉरिटी ऑफ इट इज पाकिस्तान। और मेरे ख्याल से हरियाणा से ऊपर ऊपर तक उनका इलाका बन रहा था। नहीं जी, तो उनका जो आखिरी जो उनका किला है ना महाराजा रंजीत सिंह का, वो फ्लोर में है। फ्लोर में जो उनका किला है ना, वो जो सतलुज नदी है ना, जो दोआबा और माझे को अलग करती है, तो वहां हाँ तक हाँ, उनका राज था सिर्फ। ये लुधियाना ठीक हो पटियाला गया। बठिंडा वहां तक इनका राज हुआ ही नहीं कभी। तो फिर ये तो जो उनसे आपकी लोग तरफ कहते ज्यादा हैं वैसे कि देखा जाए तो हरियाणा तक आपकी तरफ पंजाब ज्यादा है, राज है। नहीं नहीं, ये जो उनसे लोग कहते हैं कि भी हरियाणा तक पंजाब ही है और वो अच्छा खासा रीजन बयान कर रहे हैं, तो उसकी क्या हिस्ट्री है? कि उन्होंने, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, इंडिया के अंदर तो पंजाब ऑफिशियली जो सा है इनके कहने पे डिवाइड किया गया था तीन अलग अलग हम्म रीजन। तो उसकी क्या वजह थी? और अगर खालिस्तानी डिमांड कर रहे हैं एक सेपरेट नेशन, तो उसके अंदर क्या वो जो उनसे तीन इलाके अलहदा किए गए थे बाय देयर आस्किंग, क्या वो उसके अंदर वो इंक्लूड करना चाहते हैं? क्या चाहते क्या है यार सर, ये तो बताएं। यार मतलब यही तो ना, मतलब मैं भी सोचता हूँ कई बार कि जो मतलब हर दुनिया की जो कम्युनिटी होती है, उनके उनके like, होते हैं, वो सोचते हैं 100 साल का, 50 साल का आगे का, कि आगे के हमारे प्लान्स क्या होंगे। अब ये जो इलाके, ये जो मांग रहे हैं, मतलब कि जिनके 15 नक्शे बन के इंटरनेट पे घूमते हैं, जिसमें हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान के हिस्से आते हैं, 40-45 साल पहले इन्होंने यही इलाके छोड़े हैं, क्योंकि ये पंजाबी नहीं बोलते,
इनकी डिमांड थी कि पंजाब में वही पंजाबी इलाका वो होगा जो पंजाबी बोलेगा इन अच्छा, तो 1965। इसका मतलब ये है कि ये जो से लोग हैं करण भाई, एक ये मिनट बात तो खत्म करने दे भाई मेरे। तो इनकी प्लानिंग का हिसाब आप लगा लो कि 45 साल पहले जो इन्होंने इलाके खुद छोड़े हैं क्योंकि वो पंजाबी नहीं बोलते, अब इनको वापस चाहिए, अब वो पंजाबी बोलने लगे हैं। हरियाणा, हिमाचल नहीं वो बोलते नहीं ना, हिमाचल में तो हिंदी, हरियाणा में हिंदी नहीं, बोलते। लेकिन मैं करण सेट एक पॉइंट पे वापस जाना चाहूंगा और मैं आई वुड लाइक टू आस्क, इनका प्लान है क्या? व्हाट्स द मूवमेंट? ये चाह क्या रहे हैं कि कितना, नहीं करण, कितना एरिया लेना चाह रहे हैं? ए, बी, अगर एज अ माइनॉरिटी, क्योंकि इट इज वेल एस्टैब्लिश्ड ओवरऑल, अगर आप इफ यू लुक एट द डेमोग्राफी ऑफ साउथ एशिया, दे आर माइनॉरिटी। अगर इतना बड़ा एरिया लेना चाह रहे हैं तो आर दे प्लानिंग टू लाइक कॉलोनाइज दिस रीजन? क्या करना चाह रहे हैं? क्योंकि दैट्स कॉलोनाइजेशन 101। मैं क्लियर कहूंगा, दैट्स देन ये कॉलोनाइज करना चाह रहे हैं इस डे एंड एज में। क्या करना चाह रहे हैं? सेपरेटिस्ट उनको कहते हैं कि जिस तरह एक 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 मेजॉरिटी है। फॉर इंस्टेंस इफ मैं जरा दुखती रख पे हाथ रखूंगा, कश्मीर का हम इशू उठाते हैं ना, वो समझ आती है सेपरेटिस्ट है। एक मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस आपका है जो कि चाह रहा है कि हम अलग हों। करण, आर यू फॉलोइंग? लाइक दैट मेक सेंस? वो मैं आपको सेपरेटिस्ट सुन समझ रहा आ हूँ, रहा आप बात है। खत्म कर रहे हैं। हाँ, एक माइनॉरिटी अगर उठ के कहे कि हम एक मेजॉरिटी पूरा मुल्क लेना चाहते हैं, दैट्स कॉलोनाइजेशन 101। नहीं कॉलोनाइजेशन, उसके बाद देखिए ना कि उनकी डिमांड ये है कि पहली बात तो ये है कि वो बताते नहीं है कि जब हमारी स्टेट बनेगी तो उसका रूलिंग स्टाइल क्या होगा, चलेगी कैसे या चलेगी नहीं कैसे, डेमोक्रेसी होगी या नहीं होगी, वो अभी तक किसी को कुछ नहीं पता। उनको बस लैंड चाहिए। देखिए इसको तो मैं कहूँगा कि जैसे ना कि एक डिप्रेशन की बीमारी हो ना, क्योंकि अगर आपने आई डोंट नो यू हैव यू मेट और नॉट, कि जितने भी डिप्रेशन के जो पेशेंट होते हैं ना वो पास्ट में रहते हैं, वो प्रेजेंट में नहीं रहते। वो हमेशा बात करेंगे कि यार मेरे साथ ऐसा हो गया या मेरे साथ ऐसे धक्का हो गया या प्रॉब्लम होगी। बट इफ यू, because they have nothing to glorify in the present and they always go in in the past. हालांकि प्रेजेंट में भी है, आज भी इंडिया इंडिया वन हॉकी टीम वन गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स, तो उसमें काफी सिख भी थे। बट दे ओनली वांट टू चूज द पीपल हु एग्री विद देम, जो उनकी भाषा बोले। जो अब तो आज की तारीख में वो सिख को सिख नहीं मानते जब तक वो खालिस्तान को सपोर्ट ना करे। आज की तारीख में तो बंदा सिख ही नहीं है। I think you got a new people. Let's talk to them. मैं तो बोलता ही रहता हूँ। Yeah, we have Sandeep Bajwa sahab. Bajwa sahab, if you have any comments, go ahead. बोले। हेलो, क्या हाल है सबके? सब ठीक है? नमस्कार, जय श्री राम, जी सत श्री अकाल जी। जी सर, सही बात। हाँ जी, मैं तो I lived through 1980s. I was 13-14 years old, when I saw everything in front of me. तो मुझे तो सब पता है पीछे से क्या हो रहा है, क्या चल रहा था। तो प्रॉब्लम पता है क्या है? सिखिज्म जो है ना, इट्स अ यूनिवर्सल, इट्स नॉट अ पंजाबी बेस्ड, ठीक है? और दे ओनली वांट, दे आर कंफ्यूज बिटवीन धर्म and Punjabi chauvinism. They don't know what is Sikhism and what is Punjabi chauvinism. And especially, it's not only Punjabi chauvinism, it's a Punjabi Jat chauvinism. I'm myself a Jat, I know that. Because mostly Khalistanis are Jats, majority, vast majority. So, and it is very few people. I mean, last time when they had an election, they never get more than 5% of the votes in any area. Except for this time, Simran Singh Man got lot of votes. I think he got from Sangrur or somebody else. I don't know. Sangrur, yes. But historically, they had never had more than one MP or one or two MLAs ever. So living in Canada, they want a place in India between two nuclear powers or three nuclear powers without any seaport. It's like a recipe to make people poor, है ना? इकोनॉमी खत्म कर दोगे, सब कुछ खत्म कर दोगे। लोगों को भी पता, अब सारे इंडिया में पंजाबी लोग काम कर रहे हैं। कोई साउथ में कर रहा है, कोई बंगाल में कर रहा है, कोई असम में काम कर रहा है।
सिख काम कर रहे हैं, हिंदू काम कर रहे हैं। सो मुझे पंजाब के लोगों की ये डिमांड नहीं है, ये डिमांड कनाडा में रह रहे हैं ना जो लोग, उनकी है कि हमें पंजाब में जाके लेना है। या तो एक क्वेश्चन जी सेठ जी। हाँ, मैं पूछना चाह रहा था संदीप भाई, लेना तो है जगह जो खालिस्तानी कह रहे हैं, दरअसल मुझे इस बात पे कंफ्यूजन है कि लेनी कौन सी जगह है। मैं कुछ मैप्स आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले ये आपको ये मैप नजर आ रहा है संदीप भाई? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये देखें जी, दिल्ली जो है वो जाता जा रहा है। अब इन्होंने यहाँ इस के अंदर आपको अलग-अलग जो से की एरियाज जो से वो पॉइंटेड आउट नजर आ रहे हैं। ये सारे का सारा एरिया ये बिहार तक जा रहा है सर, और मेरे ख्याल से बीच में राजस्थान भी खा गए हैं। तो अब इतने सारे इलाके के अंदर प्रोपोजिशन ये है कुछ के क्या लिखा है यहाँ पे? हाँ जी, टोटल पॉपुलेशन इस 10 करोड़। ये इस इलाके की मेरे ख्याल से इससे कुछ ज्यादा ही है। बहुत ज्यादा होगी। खैर ये तो एक उनका सिर्फ कहने की चीज है ना, बहुत ज्यादा होगी। ओवरऑल जो है पंजाब जो करंटली पंजाब डिफाइंड है इंडिया के अंदर, उसकी पॉपुलेशन मेरे ख्याल से 30 मिलियन है, कुछ 30 करोड़। तो 3 करोड़, 3 उसके करोड़ भी जो पंजाब है है। 50%। हाँ जी, हाँ जी, उसके 1.5 करोड़ उसके अंदर सिख हैं, और सिखों के अंदर से मेरे ख्याल से अब ये आप बेहतर बता सकते हैं कि कितने लोग खालिस्तानी सपोर्टर हैं। मसला ये है कि यहाँ पे इंडिया के अंदर तो ये वाला हिस्सा मांग रहे हैं, मैं पाकिस्तानी हूँ, इंडिया के अंदर जो करें वो इंडिया वाले जाने। मुझे यार इस चीज से थोड़ा सा मसला हो रहा है, अब मैं क्या करूँ इसका? भाई जो यार मेन सेठ यार बाजवा साहब एक सेकंड दीजिएगा मुझे। सेठ मैंने कोई मेरा ख्याल है जो फर्स्ट हमारी लाइव चल रही थी उसमें कहा था ना 1 इंच हम ले सके ना इंडिया ले सके। वी आर टॉकिंग अबाउट 2 न्यूक्लियर स्टेट्स विद ह्यूज आर्मीज, लाइक अ गुड डिफेंस बजट, क्योंकि रखना पड़ता है जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन है। हम एक आध इंच नहीं ले सके। एक कश्मीर में चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट, वो भी किस तरह लाइक चल ही रहा है। ठीक है, ये इट्स सच अ विशफुल थिंकिंग कि आई वुड कॉल इट अ फैंटेसी ए बी। अगर ये रियलिटी में भी जाएगा आई वुड कॉल इट लाइक दे आर लाइक थिंकिंग ऑफ कॉलोनाइजिंग certain areas trying to colonize. That's how I I think would. they're more what they're trying to do is look at what they refer to as the Sikh Empire, which was I don't know how it was an empire, as it was much smaller than current day Pakistan and definitely smaller than what India is. I don't know if it's just one of those things. That's the only uh, glory they've ever had. तो वही वाली जो एक पास्ट के अंदर की एक सोच होती है कि हम जिस चीज के पास गए थे उसी के पास हम वापस आए एंड दैट्स व्हाट इट इज एट द एंड ऑफ द डे इट्स नथिंग मोर देन दैट एंड देखो नॉट ओनली दैट दे पोर्ट्रे दैट उसके उन्होंने वाइट पेपर्स निकाले हुए हैं कि नाउ इट्स एकेडमिकली प्रूवन दिस वाज द बेस्ट रूल इन द वर्ल्ड एंड ब्ला 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 और उसके अंदर वो मुसलमानों को इन्वॉल्व करते हैं, शिया सुन्नी को लेके आते हैं, हिंदुओं को लेके आते हैं, बट आयरॉनिकली स्पीकिंग इन व्हाट इज नोन एज द खालिस्तान एम्पायर और द खालसा राज, उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पे फारसी थी। राइट। सो अगेन अगर वहां पे महाराजा रंजीत सिंह इस रीजन के लोगों को फारसी और हिंदी और संस्कृत से दूर नहीं कर सका तो भाईजान वो तो आपका ग्लोरी टाइम था। आज तो आप कौन है, जरा समझाएं प्लीज, अगर कोई सुन रहा है तो बताएं हाउ इज जी दैट गोइंग टू होस्ट। पहले आप गुरुमुखी सिखाएंगे लोगों को, इंग्लिश विल गो अवे, आप इस पूरे पंजाब के रीजन को री एजुकेट करेंगे, बुक्स ट्रांसलेट करेंगे, कल्चरल वैल्यूज कौन सी होंगी, ये सारी चीजों की क्या सिचुएशन है। नाम पंजाब इज इन इटसेल्फ पारसी, क्या नाम रखेंगे, सब संधू रखेंगे। आपने क्या जाके सिंधी लोगों से बात की है
डू दे वांट टू बी पार्ट ऑफ यू? और फिर कश्मीरी जो अपनी इश्यूज के साथ हैं, क्या आप उनको भी वापस इंटेल करेंगे? और खैबर पख्तूनख्वा के जिन रीजन्स के पास पेशावर तक आप जाएंगे, उनको आप किस तरह री एजुकेट करेंगे? So all these things need to be, or and being a minority within that majority, what are you going to, how is that going to be possible? So what is your strategy to even get that into implementation is beyond me. तो ये कुछ questions हैं, अगर कोई भी इसके अंदर करना चाहे बात तो करें. And Shaji, this burra strategy, I don't understand. Like, say anything, एक बंदा लाख के अगेंस्ट खड़े होके बुर्रा करके जीत जाए, that doesn't make any sense. जी बाजवा जी. हाँ जी, इट्स अ विशफुल थिंकिंग. महाराजा रंजीत सिंह का राज 1799 से 1839 तक था. 1839 को वो गुजर गया. फिर उसके बाद फॉर नेक्स्ट 10 years there were 6 wars between सरकार खालसा एंड ब्रिटिश. देयर कॉल्ड एंग्लो सिख वॉर्स. उन 6 लड़ाइयों के बाद महाराजा रंजीत सिंह का जो किंगडम था, उसके 10 साल गुजरने के बाद ब्रिटिश के पास आ गया. तो सिर्फ वही वाले सिख किंगडम रह गए, इंडिपेंडेंट, सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट, जो ब्रिटिश के अंडर प्रोटेक्टेड थे. यानी कि महाराजा पटियाला जो करंट हरियाणा को रूल करता है, हरियाणा हिमाचल को रूल करता था. उस तरफ जींद आ गया, नाभा आ गया. ये 3-4 छोटी छोटी स्टेट्स रह गई थी इंडिपेंडेंट. महाराजा रंजीत सिंह ने तो अंग्रेजों के साथ, फ्रेंच के साथ मिल गया था. वो तो अंग्रेजों के साथ उसने क्या कहते उसे किया हुआ था कि हम तुम्हारी तरफ नहीं जाएंगे, तुम हमारी तरफ नहीं आना. तो उन्होंने अपनी बाउंड्री बनाई हुई थी सतलुज दरिया. तो इसी वजह से महाराजा रंजीत सिंह चला गया वेस्ट की तरफ, पेशावर की तरफ, कश्मीर की तरफ. सिंध भी उन्होंने अंग्रेजों को दे दिया था. सो मेजोरिटी ऑफ द एरिया जो है ना, वो खालिस्तान वाले कहते हैं हमें पाकिस्तान वाला चाहिए. इधर वाला तो सिर्फ अमृतसर डिस्ट्रिक्ट होगी, थोड़ी बहुत जलंधर डिस्ट्रिक्ट होगी, बाकी तो दैट्स इट. बाकी विशफुल थिंकिंग है, इट्स नॉट अ, संदीप जी आपने बात की थी बीच में, आपने थोड़ी देर पहले बात की थी कि खालिस्तानी मूवमेंट इज बेसिकली अ जाट मूवमेंट. तो मेरी तो अंडरस्टैंडिंग थी कि वो एक थियोलॉजिकल बेस के ऊपर कंट्री मांग रहे हैं. आप मुझे एथनोसेंट्रिसिटी से भी एक ट्राइबल सेंट्रिसिटी की मूवमेंट बता रहे हैं कि बेसिकली ये जट्टों का इल्हाक है. तो इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालें हमारे व्यूअर्स को, और बताते हैं खुद, हमें खुद भी जरा इसके ऊपर बताएं मामला क्या है कि आप जो कह रहे हैं कि जट्टों के जो स्पेसिफिक है. मेजॉरिटी ऑफ जो लैंड है ना, सिंध दरिया से लेके इवन ऑल द वे टिल बिहार, ये या तो जाट ओन करते हैं मेजॉरिटी लैंड, या बाकी अपर कास्ट लोग ओन करते हैं. सो हरियाणा पंजाब में आपको पता ही है, रूल्स बाय जाट, ऑलवेज अ जाट चीफ मिनिस्टर एवर सिंस. हरियाणा का पहली बार जाके नॉन जाट बना है चीफ मिनिस्टर. और पंजाब का तो हमेशा से सिख रहा है, किसी और को बनने नहीं दिया, और वो भी जाट सिख. सो इट्स, आई मीन, सिखिज्म के ना 5 तख्त है, 5 होली प्लेसेस है इंडिया में. उनमें से 3 पंजाब में और 2 आउटसाइड ऑफ पंजाब है. एक तो महाराष्ट्र में मुंबई के पास है, नांदेड़ में. एक पटना में है, बिहार में. और दिल्ली में कितने गुरुद्वारे हैं. अब इन्होंने सारा इंडिया सुना, अपने अंडर ले लेना. अब साउथ में भी कितने गुरुद्वारे हैं, कर्नाटका में, बिदर वगैरह में. तो हिस्टोरिकल गुरुद्वारे की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे बड़े बड़े सिख गुरु गए हुए हैं और बड़े पुराने बने हुए हैं. सो इट्स नॉट फिजिबल ही नहीं है, वायबल ही नहीं है. एंड मोस्टली जो जिनकी वे बात कर रहे हैं ना, ये पढ़े लिखे लोग नहीं है, जो खालिस्तानी है. ये ज्योग्राफिकली चैलेंज, उन्हें पता भी नहीं हम देख कर रहे हैं कौन सा इलाका किसके पास है, कैसे है. इट्स जस्ट अ विशफुल थिंकिंग. हेजोमनी है, जट्टों की हेजोमनी है. फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई कि इंडिया में लैंड सीलिंग एक्ट आ गया. आपको सुना आपने शायद कि इंडिया में जब लैंड सीलिंग एक्ट आ गया तो एक आदमी 18 एकड़ से लैंड इजारा नहीं रख सकता. तो बहुत सारी फैमिलीज की लैंड चली गई, बट उन्होंने कोशिश की बचाने की, नहीं मिल सके. उसके बाद से ये 70s के बाद से ऐसी प्रॉब्लम आनी शुरू हुई है, उससे पहले नहीं हुई थी.
तो आप बेसिकली बता रहे हैं कि खालिस्तानी मूवमेंट जट सेंट्रिक इस वजह से हो गई है क्योंकि वहाँ पे जट्टों के पास ज़मीनें हैं। अब हाँ नॉर्मली तो ये समझा जाता है कि जिन लोगों के पास ज़मीनें होती हैं, ज़मींदार होते हैं, दे आर फ्रॉम वेरी फाइनेंशियली स्टेबल बैकग्राउंड्स। तो जो फाइनेंशियली स्टेबल बैकग्राउंड्स एक होते हैं, वाकया भी गुजरा था राउंड अबाउट ईयर एंड हाफ अगो, जहाँ पे एक नॉन जट सिख बंदा था, वो जाके मेरा ख्याल है गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ रहा था और इन्होंने उसको मार दिया था. Certain people just went and killed him. And I've spoken to a number of Khalistani people who happen to be Sikhs as well. वो आके ये बोलते हैं कि it's a very common phenomena कि उसने गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की थी, तो he deserved everything. और उसने बेअदबी क्या की थी? He was not allowed to read the actual गुरु ग्रंथ साहब for some reason, क्योंकि इनके बीच के अंदर जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनके बीच में कुछ है. मेरा ख्याल है ये यासिर अहमद साहब कोई आए हैं, इनसे भी जरा थोड़ी सी आई थिंक वी शुड कन्वर्स विद हिम एज वेल. Hopefully he's been listening to the entire conversation or part of it. तो आप बोलिए यासिर अहमद साहब, आप थोड़ा अपना तारुफ करा दें. Please go ahead with the subject. हेलो कैसे हैं सर आप लोग? सब ठीक है? हेलो जी जी जी, गो अहेड। जी, मुझे बोलिए थोड़ा यासिर सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं आवाज़ बदल रहा हूँ. वॉइस चेंजर नहीं है मेरे पास. जी जी बोले। जी जी हाँ, आप बस बोले, नो वरीज, आप वॉइस चेंज करके बात करें. आप लोग पर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बस अप्रिशिएट करने आया था आपको. बाकी और कोई बात नहीं, आप लोग कंटिन्यू रखें, बस यही बात करने आया था. चले नहीं, फिर लेकिन आपको आपका अपना ओपिनियन क्या है इस चीज के अंदर, और हम क्या अच्छा काम कर रहे हैं? हमें समझ नहीं आई ऑन व्हाट ग्राउंड्स एंड व्हाट बेसिस, क्योंकि हम ये भी नहीं चाहते कि आप कुछ और समझें और आप अप्रिशिएट कर जाएं और वो हमारा मोटिव ना हो. अच्छा, तो जरा वैसे थोड़ा ये किसके ऊपर टॉपिक है? खालिस्तानी मूवमेंट के ऊपर? जी हाँ, वो तो आप सही कर रहे हैं ना कि खालिस्तानियों को मैं कहता हूँ कि राज्य वो अलग नहीं करके देना चाहिए, क्योंकि इंडिया को मैं नहीं कहता कि टूटना चाहिए, मैं यही कहूँगा. आप ठीक खुद है। किस एरिया से हैं? आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? आर यू पाकिस्तानी और आर यू एन इंडियन? सर मैं असल में पाकिस्तानी हूँ, असल में यूएस के अंदर होता हूँ मैं. बट मैं सही. दो देशों के बीच में मोहब्बत ही फैलाता हूँ नहीं, लेकिन कि मेरा आपसे एक क्वेश्चन है. आप मुझे ये बताएं कि इंडिया टूटने की तो बाद की बात है, इससे तो पाकिस्तान को खुद को खतरा है. अगर फॉर एग्जांपल कल को खालिस्तान बन जाता है इंडियन पंजाब के अंदर, तो इंडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट था सिख लोगों के साथ इन मेजॉरिटी वो तो 1984 के अंदर आया है. उसके बाद व्हाट डोंट यू थिंक इंडिया विल एक्ट as use Khalistan, a newly created Khalistan, as a buffer state to attack Pakistan and help them conquer Pakistan? उनके लिए तो देखें एक just एंड rhetoric है उसके अंदर. एंड देखें सर, ऑल्सो इसका यासिर एक और चीज, लाइक जी 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 बिफोर यू गो अहेड, आई थिंक the conflict between Sikhs and Muslims goes centuries. ठीक है, it's not just कि अभी हुआ, कब हुआ, 47 में देखें, उससे पीछे चले जाएं. The conflicts have been there, and even in their writings, in their scriptures, we have seen things जो कि they are quite against Muslims. So उस पे we have to be very cautious when we are looking at Khalistan being a Pakistani and a Muslim. तो आप इस पे अब आगे बात करें. सर देखें, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान वैसे भी तबाह होने वाला है, क्योंकि आई होप कि ऐसा ना हो, बट इन्होंने जो तालिबानों को इतना सपोर्ट किया हुआ है, अपना अब्बू बनाया हुआ है, जिसकी वजह से ये है कि खालिस्तान बने ना बने, बट पाकिस्तान डिफॉल्ट हो सकता है, क्योंकि उन्होंने तालिबानों को इतना ज्यादा बना दिया है कि हमें खतरा ही तालिबान से, टीटीपी से, अच्छा, मेरा आपसे टीएलपी से. क्वेश्चन है, आप मुझे बताएं, आपको क्या लगता है majority of Pakistanis support Taliban? Is that what you're suggesting?
या तालिबान जो है तो वही पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। नहीं, अच्छा पाकिस्तान मुझे के ये लिए बताएं, खतरा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान सपोर्ट करता है, जबकि पाकिस्तानी पॉपुलस जो है, या आपको जो पाकिस्तानी स्टेट नज़र आती है, एस्टैब्लिशमेंट से लेके आपका पॉलिटिकल अरीना तक, इन रीसेंट टाइम्स अगर हम लास्ट डेकेड को देखें, सो दे हैव मूव्ड अवे फ्रॉम एक्सट्रीमिज्म. नहीं They नहीं सर, ये neither the people nor the and establishment support the Taliban. They don't. सर ये also जो one very नहीं Yasir, one more important point is तालिबान ने जो कि इस रीजन में आए हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा किन के लोग मारे हैं? इट्स द पाकिस्तानीज. आप या काउंट जाके देखें जी. तो व्हाई वुड पाकिस्तानी सपोर्ट तालिबान? इज देयर अ सर पॉइंट? मैं नो. सर बिल्कुल सर आप सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जो है तालिबान से मोहब्बत करता है, उसके गुण गा रहा होता है बैठ के। पाकिस्तानी आईएसआई ने भी जो है तालिबानों की मदद करी है, अपना यासिर अमेरिका को भाई, मदद सर, करी। हमने आप तो आप दो पता है क्या, जंगें लड़ ली आपने हैं। आपके पास कोई सर्वे है कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा तालिबान को और एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलाइजेशन को करता है? या मैं आपको कुछ थोड़े से फैक्ट्स और सर फिगर्स प्रोवाइड कर? फलक नवाज एक न्यूज एंकर है, फलक वो नाज पूरी पाकिस्तानी कौम है, न्यूज अच्छा एंकर है उसके सर। पास कोई अच्छा सर्वे है? मुझे ये बताएं, लेट 80s अर्ली 90s में टाइम्स के मैगजीन पे किसकी पिक्चर किस मुल्क ने, और टाइम्स के मैगजीन में एज अ हीरो किसने लगाई थी? इट वाजंट अ पाकिस्तानी मैगजीन. उसमें उसामा बिन लादेन की लगाई थी, और किस मुल्क ने लगाई थी? नॉट ओनली ठीक है. दैट, अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स और गार्डियन की 80s के अंदर की हेडलाइंस उठाएं तो व्हाट आर दे बेसिकली स्टेटिंग? वो यहाँ पे हम अभी डिस्प्ले पे आपको लगा के दिखा देते हैं, अभी 2 मिनट लगेंगे. Yeah. गार्डियन And की और Guys, न्यूयॉर्क टाइम्स but की we're moving बाकायदा away from हेडलाइन है. that. Guys, एक we're सेकंड, moving away. yes, I agree. We are moving yeah, away with I the understand, topic. but I think this Uh, needs to be yeah, corrected. क्योंकि ये समझ yeah. रहे थे कि हम बड़ी फेवर कर रहे हैं पाकिस्तान की, या हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं. मैंने इसीलिए मोटिव पहचान दिया था, and I want to take this opportunity to make that point very clear. We happen to be of Pakistani origin. Some of them, we're very proud Pakistanis. We happen to be Muslims, and we are not going to go against our own state in any way or form. We speak about, have conversations about certain subjects, about certain topics based on facts. ये बोल देना आके आप उस मुल्क की बात कर रहे हैं जहां पे लाल मस्जिद के ऊपर जब अटैक हुआ था, आज मेजॉरिटी ये बोलती है कि दैट वाज अ गुड थिंग. जहां पे आपकी एस्टैब्लिशमेंट, आपकी आर्मी ने एक रेडिकल फोर्स को एलिमिनेट किया था. You're talking about that country. Or yes, we do have people of extreme background within our ranks, but they are a minority. पाकिस्तान के अंदर कभी कोई एक पॉलिटिकल इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट पार्टी पावर के अंदर नहीं आई, उनका वोट बैंक ही नहीं है. ठीक है, अभी लास्ट ईयर की बात है, स्वात वैली के अंदर मोर देन 100,000 पीपल केम आउट के अक्रॉस द बॉर्डर अफगानिस्तान के अंदर तालिबान और रेडिकलाइजेशन हो रही है. इट्स मेकिंग अ कम बैक इन आवर प्लेस. तो उस चीज को किस तरीके से हम एरेडिकेट करें, एंड वी नीड टू एरेडिकेट दैट. तो मुझे नहीं पता कि आप किन बेसिस के ऊपर ग्राउंड रियलिटीज को कंप्लीटली इग्नोर करके सर इसको सर एक देखें, एंटी पाकिस्तान रेटोरिक बना नहीं के, नहीं द सब्जेक्ट खालिस्तान, आप आवाज बदल के एक फ्री कंट्री के अंदर रहते हैं आप, जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोला जाता है, वहां पे आपको वॉइस चेंजर यूज करना पड़ रहा है. तो मुझे बड़ी हैरत है, व्हाई कैन यू नॉट ओन your words and opinions in public when you सर live in देखें, a free country? मैं खुद इसमें पाकिस्तानी आपको हूँ। शर्म आती है? भाई नहीं नहीं साहब, जी सर, जी माजरत के साथ आप शर्मिंदा हैं कि आप इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, आपको डर है. नहीं, ठीक ठीक है. शादी, चले इन्हें सर देखें, सुनते हैं थोड़े. सर मुझे यासिर, मुझे एक यासिर मुझे एक चीज पे आप एक मिनट बोलेंगे. बोलने का मौका। चले, बोले जी, प्लीज गो अहेड. मुझे सिर्फ 1 मिनट दें। देखिए बात ये, मैं खुद पाकिस्तानी हूँ और मैं जानता हूँ मुझे खतरा इंडिया से बिल्कुल भी नहीं है, ना खालिस्तान से। खालिस्तान बने या ना बने, मुझे कोई पाकिस्तान को से जो है कोई खतरा नहीं। हमें जो खतरा है वो बीएलपी से है, टीटीपी से है, तालिबानों से सर खतरा है। उन्होंने अभी ऐलान किया चित्राल में कि हम गजवा पाकिस्तान कर रहे हैं बैठ के।
तो वो हमारे बहुत बड़े दुश्मन है और हमारा बच्चा बच्चा जो है देखें देखें भाई साहब, संडे को हम इस चीज के ऊपर भी प्रोग्राम कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू बी कैरिंग दैट आउट, ठीक है, लेकिन डिटेल के अंदर यहाँ पर किसी ने बोला ही नहीं है, दिस इज नॉट अ चैनल जो ये डिस्कस करता है कि पाकिस्तान को इंडिया से खतरा है और इंडिया को पाकिस्तान से खतरा है। We talk about facts, we talk about what's happening in news, we talk about things, we talk about national narratives, and that's what we do. हमारा कोई इस तरह का नहीं है कि we're going to degrade one country over another when the facts state something else. तो उसी तरीके से आप ये जो आप मुझे बताएं, आर यू अ मुस्लिम सर? आप मुसलमान हैं? अगर आप कंफर्टेबल हैं ये बोलने के लिए। या यस सर। ठीक है शाहजी आई थिंक if Yasir you're reading third grade Sunday magazine and coming up with the news जो कि उधर शाया होती है, I think that won't make any sense. We are talking about and before we move on, I want to repeat that one particular point जो मैं उस वक्त रेज कर रहा था। न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर और गार्डियन की बकायदा पोस्ट थी, बकायदा 80s के अंदर हेडलाइंस थी, वो आप आर्काइव्स में जाके देख सकते हैं, that a God-fearing hero is fighting godless Soviet Union and Soviets and the communists. और तस्वीर पता है किसकी थी? Osama bin Laden. That's who they were showing. Shaji, getting your face on Times cover page is huge. You know that. ठीक है. And like they published him as a savior, as a messiah. So we can't मैं ये भी पॉइंट आउट करना चाहता हूँ फुरकान भाई के I think it's about time we move on from this topic. Thank you. हाँ चले क्लोजिंग स्टेटमेंट इस टॉपिक के ऊपर मैं ये दूंगा कि पाकिस्तान का तालिबान के साथ रिलेशन मोस्टली पिछली डेकेड में ये रहा है कि we fought two major wars against them. Operation Zarb-e-Azb and Operation Raddul Fasad were against these people. अगर जब थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि हमने पंजाब का 1 इंच नहीं देना, जो लोग कह रहे हैं कि लाहौर में आएंगे और मुल्तान तक जाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि दूसरी साइड से हम अटक तक किसी को आने देंगे? जी बिल्कुल सेड our state policy has been very clear and जो आपने हाईलाइट किया है in the recent last decade जो operations हुए हैं against these fringe elements, I would call them fringe elements, outliers, our state policy has been very clear on such elements. We'll move on with I think you're absolutely correct, and let's not delve into further conversation in regards to that. We're soon going to be on Sunday. We're going to be having a conversation in relation to internal politics and all these elements of radicalization. So Sunday को इसके ऊपर डिटेल के अंदर बात होगी. Let's not delve into that. और आप जरूर आइएगा जनाब, क्या नाम था उनका, वो चले गए हैं मुझे लगता है, सोचा था एटलीस्ट खुदाफिज कह के तो जाएंगे, लेकिन चले कोई मसला नहीं। ओके शाहजी, लेट्स मूव अहेड विद सेड जी खालिस्तानी मूवमेंट इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, जो कि जिसमें फिर भिंद्रावाला का भी जिक्र आएगा, and also we would talk about the dichotomy and try to describe and discuss the rifts basically जो कि exist करते हैं within the Khalistani movement, इनकी आइडियोलॉजी, कल्चरल। मेरा ख्याल है इसके लिए हमें संदीप बाजवा साहब की तरफ पास जाना चाहिए। जी बिल्कुल। एंड खालिस्तान मूवमेंट की बात हो रहे हैं या 80s की? जी आप अभी थोड़ा सुन लें, आप ये संदीप बाजवा साहब जी मैं शाहजी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूं कि खालिस्तानी मूवमेंट इन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एंड देन भिंद्रावाला एंड then basically describe the rifts that basically exist within the movement and try to also discuss and highlight the aspects of differences in ideology, cultural aspects and strategic differences that basically exist between the Khalistani factions and basically how they affect the movement's coherence. And then Bhindrawala's Banda Bahadur's role, I think,
and then try to look at the historical significance of Banda Bahadur and his या सो influence आई on the डोंट थिंक यू डू दैट इन जी द एंटायर मोनोलॉग तो आप 80s से बिगिन करें बल्कि यहाँ से बिगिन करें एवरीवन नोस कि सिख्स बेसिकली chose to remain within India as they thought that they're going to get certain autonomous rights शुरू में जहाँ तक मुझे याद है जितना मैंने पढ़ा है and you can correct me संदीप साहब or anyone else अगर मैं कोई गलत बात स्टेट कर दूं तो Bhindranwala originally did not want a separate homeland. He was looking for certain amount of autonomy, and it was the Congress party within India, namely Indira Gandhi-led government, which basically tried to take support from that element to an extent, and then the chaos began. I'm not blaming the Congress party. I'm not blaming the other elements. As you said very rightly, that you were a person who lived through those moments and you are somebody who saw that. तो आपसे बेहतर कौन ये सारा कुछ एक्सप्लेन कर सकता है सो द स्टेज इज ऑल योर्स संदीप बोलिए I mean, I'll tell you, क्योंकि Punjab is almost 30% Jats. So Bhindranwala was a Jat. His all top 3 generals were Jat. People who were fighting against him, Barad was a Jat. General Shubhek Singh was a Jat. पंजाब का जो सबसे बड़ा डीजीपी था पुलिस वाला KPS Gill, he was a Jat. So I mean, both sides were the similar people, and that's what happened here. Baki, I mean, the whole thing is देखो मैं देखता हूँ इकोनॉमी की तरफ से अगर ये ना होता 80s में तो जितनी हरियाणा की इकोनॉमी है दिल्ली के आसपास की जितनी भी इंडस्ट्री है ये सारी पंजाब में थी लुधियाना में थी जलंधर में अमृतसर में थी लोग पंजाब छोड़ के बाहर क्यों आए हैं इसीलिए आए ना इकोनॉमी नीचे चली गई दैट्स द ह्यूज थिंग अगर ये कुछ ना होता तो आज पंजाब ऐसा पहले 80 से पहले पंजाब नंबर लेकिन संदीप जी उस वक्त हुआ क्या था इफ यू वुड लाइक टू जस्ट गो इन टर्म्स ऑफ द फैक्चुअल बेसिस इन रिगार्ड्स टू व्हाट वाज द पॉलिटिक्स लाइक व्हाट हैपेंड बिटवीन कम्युनिटीज और उसके बाद क्या सिचुएशन हमेशा से जो कांग्रेस पार्टी है ना वो पंजाब को रूल करती आ रही थी ठीक है एंड देन व्हाट हैपन के अकाली पार्टी जीत गई अकाली पार्टी का चीफ मिनिस्टर बन गया प्रकाश सिंह बादल वो भी टिल्लों जाट है तो कांग्रेस पार्टी ने फिर अपना एक नया चाल खेला उन्हें भिंडरावाले को आगे ले आए कि किसी तरह अकाली पार्टी के बीच में फूट डाल के वो बन जाए क्योंकि स्टार्टिंग के दिनों में 77-78 में भिंडरावाला और इंदिरा गांधी जब भी पंजाब में आती थी अपना भाषण देने तो भिंडरावाला के साथ उसके साथ बैठता था ऊपर स्टेज के ऊपर पहले साथ ही रहते थे फिर क्या हुआ कि एक निरंकारी बाबा था वो कहता है कि ऐसे गुरु गोविंद सिंह ने 5 प्यारे बनाए हैं मैं 7 सितारे बनाऊंगा और वो गोल्ड टेम्पल में आ गया अपने आदमी लेके और उसने 78 की बात है ये 13 अप्रैल 78 तो जो भिंडरावाले के दूसरे लोग थे इन्होंने कहा कि हम ये करने नहीं देंगे तो उन्होंने गोलियां मार मार के 13 आदमी मार दिए इनके तो उसके बाद से ही भिंडरावाला बिकेम रोग और उसने अपनी पूरी फौज बना ली फ्रॉम फिर इनका काम ये होता था कि लोगों से गांव में जाके कहते थे हमें इतने पैसे दे दो हमने अपनी कौम की सेवा करनी है और ये करना वो करना इस तरह फिर कहता था फॉर एग्जाम्पल एक लाला जगत नारायण था जलंधर से न्यूज़पेपर थी उसकी बहुत मशहूर न्यूज़पेपर पंजाब केसरी वो उसके ऊपर आर्टिकल लिखते थे तो इसके लोगों को मरवाने का ऐसा होता था कि अपनी स्पीच में क्या था उसको उन्हें गड्डी चाड़ दो पंजाब बीच ऐसा उसने कभी ट्रक नहीं कहा कि उसको जाके गोली मार दो इस तरह की चीजें बोलता था फिर कोई जाके 2 आदमी जाके उसको मारा है फिर कभी क्या होता कि हमें जो ये चोटियों वाले हैं इनको कुछ करना पड़ेगा तो फिर पता लगता है कि बस से रोक के लोग जिनके बाल कटे हुए उनको गोलियां मार दी इस तरह बड़े केस हुए 84 से पहले की बात कर रहा हूं मैं फिर एक बार एक रात में इन्होंने 85 की बात है एक रात में 38 रेलवे स्टेशन पे बम मारे थे 38 रेलवे स्टेशन ओनली इन पंजाब और फिर रात के 6 बजे से लेके सुबह के 7 बजे तक कोई बस नहीं चलती थी और कोई भी बड़ा आदमी होता था फॉर एग्जांपल
एनीथिंग टू डू विद एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर के ऊपर IAS ऑफिसर्स वगैरह होते हैं या DM GM बराबर, किसी का सिर काट के चौराहे पे रख देते थे इस तरह की बहुत चीजें हुई। 84 से पहले हम बड़ा कुछ देखा कि गाय की पूंछ किसी ने मंदिर में फेंक दी, किसी ने सिगरेटें फेंक दी गुरुद्वारे में, इस तरह की अफवाहें आने शुरू हो गई। आजकल तो हर जगह पे फोन है, उस टाइम कुछ फोन नहीं होता था तो लोग भड़क जाते थे। सुमित साहब, मैंने तो ये सुना है बहुत लोगों से, एंड यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि कम्युनिटीज जो पंजाबी हिंदूज हैं और जो सिख हैं उनके बिटवीन काफ़ी वायलेंस हो गया था एट वन स्टेज। एंड नॉट ओनली दैट, जो स्पीचेस थी जिस तरह फॉर एग्जांपल रिसेंट टाइम्स के अंदर आपके अर्बन कल्चर के अंदर भी, पंजाब में क्या, पाकिस्तान में क्या, इंडिया में क्या, इट्स एवरीवेयर, जो रिसेंट गाने बन रहे हैं और जो काफ़ी चीज़ें देर बेसिकली स्पीचेस ऑफ भिंडरांवाला। अब ये जो आजकल एक गाना मशहूर हुआ है, इट्स वेरी सरप्राइजिंग एंड पीपल कैन गो एंड वेरीफाई दैट, जो मैं डाकू एक नंबर दा वाला गाना है, दैट इज बेसिकली अ स्पीच फ्रॉम भिंडरांवाला, जहाँ पे वो उसने बहुत क्लियरली कहा है कि मैं एक नंबर का डाकू हूँ और मेरी 2 जीपें खड़ी हैं, एक जीप खड़ी है पुलिस थाने में और मैं वहां से 2 निकलवा लूंगा। It's ironic after almost 40 years that becomes a very popular song with the exact lyrics. तो ये ingrainment के elements कहाँ से आ रहे हैं? ये violence का culture जो है ये synonymous क्यों कर दिया गया जट्टों और पंजाबियों के साथ? अच्छा, before संदीप जी you could respond, थोड़े से शाजी लिरिक्स ऐसे हैं कि मैं डाकू एक नंबर दा, थोड़ा मेरे को करेक्ट कर दूं, बाकी संदीप जी को। That's okay. That's exactly what he said as well. Give and take. Yeah. It doesn't rhyme, Yeah. so I use Bhindrangwala's words. But I would give it that it's a nice song. It's a nice song. मुझे तो गुरदास मान गाने अच्छे लगते हैं। I don't listen to. सर मेरे एक क्वेश्चन था सर। जी आप चले जाए जी। सुमंत जी सर, क्या बोले सर, इंडिया से शायद वहाँ पे सुबह हो रहा होगा, तो आप रात हो रहा है। गुड मॉर्निंग सर। मेरा एक सवाल था सर, मतलब जी सर, मतलब जैसे कि जैसे हमने देखा ना सर, मणिपुर में हो रहा है सर, जैसे कि वहाँ पे मैती हिंदू के साथ लड़ाई हो रहा है। अभी थोड़ा दिन पहले शिवमोगा में भी हुआ था कि कुछ मुस्लिम और हिंदू लोगों के बीच दंगा हो गया। कश्मीर में हुआ था सर। अभी पंजाब में भी जो भी हमको अच्छे से डेट याद नहीं है, जो 1980 जो आप बोले तो खालिस्तान मूवमेंट हुआ था, वहाँ भी हिंदू लोग मार खाए। अभी कनाडा में भी, वहाँ पे भी पाकिस्तानी लोग और पंजाबी लोग जो खालिस्तानी लोग हैं वो लोग हिंदू लोग आते हैं। हिंदू लोग हर जगह ही क्यों मार खाते हैं? एक जगह 2 जगह समझ में आता है, और हर जगह इन्हीं लोग क्यों टारगेट बन जाते हैं सर? मतलब क्रिश्चियन से भी मार खा लेते हैं, इंडिया में रहते हुए, मेजोरिटी में रहते हुए मार खा लेते। तो कनाडा का तो समझ में आता है, इंडिया में रहते ही मार खा लेते, और उसके बाद भी यूनिटी नहीं आता। सबसे पहली बात है कि ये मसला हिंदू सरदार क्रिश्चियंस का नहीं है। जो मणिपुर की बात कर रहे हैं ना आप, अगर न्यूज़पेपर पढ़े तो वो 2 ट्राइबल्स का इशू है। एक माइते ट्राइब है जो जमीन पे रहती है, दूसरी कोकी ट्राइब है जो पहाड़ों में रहती है। ओके, ये उनका मसला है। जो जमीन पे रहते हैं उनके पास जमीन ज्यादा है तो उनकी इकोनॉमी के इशू है। ये क्रिश्चियन उर्दू से ये तो उन्होंने बना दी है, ऐसा कोई इशू नहीं है। नहीं सर, संदीप वीडियोस लीक हुआ था सर। सुमंत एक सेकंड, आप मुझे ये बताएं कि जो जुल्म कर रहा है आप उसे सपोर्ट कर रहे हैं, या जिसके साथ जुल्म हो रहा है आप उसको मॉक कर रहे हैं? मैं किसी को मॉक नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूं। नहीं, मैं सुमंत से पूछ रहा हूँ। दैट्स माय क्वेश्चन टू सुमंत। सर मैं मॉक नहीं कर रहा हूँ सर, मतलब मैं खुद हिंदू हूँ सर, मैं जनरली पूछ रहा हूँ, क्योंकि सर वो जो आपने कहा ना जो मैथी वाला, मेरा बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है फरकान भाई। आई थिंक ये क्वेश्चन तो हमें सुमंत से करना चाहिए। जी सुमंत से कर रहा हूँ, एक सेकंड ना जी मैं कोई और क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं उन्हीं के क्वेश्चन को। अच्छा, ओके जी सर। तो सुमंत, ये तो आपकी कंट्री के अंदर के लोग हैं, आप तो उनके साथ रहते हैं, वो कनाडा जाते हैं तब भी उनको आपसे तकलीफ है। लेट्स सपोज इट दैट वे, वो इंडिया में रहते हैं तब भी उनको आपसे तकलीफ है। आप ऐसा उनके साथ क्या करते हैं कि वो दुनिया में जहां भी जाते हैं उनको आपके साथ तकलीफ है? ये तो इस तरह भी पोज किया जा सकता है, बट यू वोंट लाइक इट, राइट?
because that is not the way to have a conversation. That is accusation. हम में से कोई position of authority में नहीं है सुमंत भाई. We are normal people having a conversation. ठीक है, नहीं ये सर, वाली ये बातें सूट करती हैं जयशंकर को, ये वाली बातें सूट करती हैं बिलावल भुट्टो को, जो फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं उस टाइम के, ये बातें सूट करती हैं नवाज शरीफ को, एक्स प्राइम मिनिस्टर है, इमरान खान को, एक्स प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, ये बातें आप जैसे मेरे जैसे लोगों को नहीं सूट करती कि आपने ऐसे किया तो वैसे क्या होगा, ऐसे किया. वी वुड लाइक टू कीप थिंग्स रियलिस्टिक. सो कीपिंग दैट इन माइंड, थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेश्चन. हमें नहीं पता, आप अथॉरिटीज से जाके पूछें कि उनको क्यों प्रॉब्लम्स रहती हैं, और जहाँ पे भी जाते हैं, और पाकिस्तान और इंडिया की दुश्मनी कैसे सही होगी, क्योंकि मैं तो आपको बताता हूँ मुझे नहीं पता है. आई डोंट नो. I can just give my opinion and that is not authoritative. तो संदीप बाजवा साहब, कमिंग बैक टू यू, आपसे काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस किए थे उस टाइम के हिसाब से. तो भिंडरांवाला को जब वहाँ से थैंक यू सर. हेलो, क्या हुआ? अब यू गॉट म्यूटेड, आपकी आवाज म्यूट हो गई. जी जी जी, मेरा ख्याल है लाइक चाची के इंटरनेट को कोई इशू आया, बट वो जो आप 80s का बता रहे थे बिंद्रावाला एंड ऑल, संदीप जी प्लीज कंटिन्यू. बस ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हिंदू और सिखों के बीच में कोई प्रॉब्लम थी, अभी भी नहीं है. अभी भी मेरा गांव जो गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे भी 6-7 फैमिलीज हिंदुओं की रह रही हैं अभी भी. तो ऐसा नहीं है कि अभी भी पंजाब की पॉपुलेशन 50% हिंदू ही है, और हर जगह पे है. संदीप जी, आपने जो पिक्चर पोर्ट्रे किया है भिंडरांवाले की, जो बताया जाता है भिंडरांवाले का आउटसाइड ऑफ इंडिया, नॉट द इंडियन नैरेटिव, नॉन इंडियन नैरेटिव यूजुअली ये होता है कि ही वाज अ फ्रीडम फाइटर एंड व्हाट नॉट, और फ्रीडम फाइटर्स दुनिया में बहुत सारे फिरे हैं. आप जो पिक्चर पोर्ट्रे कर रहे हैं कि भाई लोगों को मार दिया, एक्सटॉर्शन कर ली, पूरे के पूरे गांव के अंदर एक्सटॉर्शन कर ली, किसी के ऊपर हिट लगा दी, या पंजाबी में कहते हैं ना किसी की सुपारी दे देना, इस तरह की आप पिक्चर पोर्ट्रे कर रहे हैं. फ्रीडम फाइटर वाज ही अ गून और हमारे साथ तो हुआ ना भाई. मैं अमृतसर में रहता था 1978, मैं 84 से पहले की बात बता रहा हूँ. तो मैं ऑलमोस्ट हफ्ते में 3 बार 4 बार सुबह 3 बजे उठ के गोल्ड टेम्पल जाता था सेवा करने. ठीक है, तो मैं तो भिंडरांवाले से खुद बड़ी बार मिला हूँ. ठीक है, और वो कोई फंक्शन होता, कोई गुरुपुरब होता, तो हम वहाँ पे दिए वगैरह लगाने जाते थे, काम करने जाते थे, सेवा करने जाते थे. सो मैंने तो खुद उसके साथ देखा. आई वॉज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, और मुझे कहता था तेरे बाल क्यों कटे हुए हैं. मेरे तब भी बाल कटे हुए थे. तो तू सिर पे पगड़ी क्यों नहीं बांध गया था, दिस एंड दैट. और मुझे पता लग गया था कि ही वाज बेसिकली एन अनएजुकेटेड पर्सन, कोई पढ़ा लिखा नहीं था वो. और बस एक ही बात रिपीट करता था कि अगर जिस दिन इंडियन आर्मी घुस गई गोल्ड टेम्पल में, उस दिन हम खालिस्तान बना देंगे. और अच्छा पाकिस्तान. हाँ जी संदीप जी, एक पर्सनल क्वेश्चन मैं पूछूंगा. यू कम फ्रॉम द सिख कम्युनिटी? हाँ जी. अच्छा, तो मैं लाइक एक चीज आपसे बड़ी, इट इज अ बिट बिटर क्वेश्चन, थोड़ा कोई बात मुश्किल नहीं. सवाल होगा, बट जो हाँ. अभी करंट जितने मेरा पाला पड़ा है खालिस्तानियों से, द पीपल हु आई हैव टॉक टू, कन्वर्स्ड विद, जो कि खालिस्तानी मूवमेंट के सपोर्टर्स हैं, they are all not very educated. They can't have a हाँ. conversation. They would resort to abuses in a Yeah. second. ठीक है? And they would go to like behave like hooligans. ठीक है? Rascals. Yeah. And they would resort to like mob hand. You know the slang. हाँ. ठीक है? हाँ. सही है. Why not like educated people who can converse and who can actually think about the younger generation and the future generations के उनके साथ क्या बेहतर हमने करना है. We want a separate state. Okay, why we want a separate state? Build a narrative. And मैंने आज तक कभी भी, मैं ओपनली कहूंगा कि uneducated class को कभी separatist movement सक्सेसफुल बनाते नहीं देखा.
जहां भी इंडिपेंडेंस या सेपरेटिस्ट की मूवमेंट्स सक्सेसफुल रही हैं, एजुकेटेड पीपल हैव बेसिकली कम इन द लीड, और उन्होंने बेसिकली लीड की हैं इस तरह की मूवमेंट्स और सक्सेसफुल बनाई हैं. Why like this Khalistani movement is hijacked by such idiots, I would say. हाँ, I mean, खालिस्तानी मूवमेंट इज नॉट हाईजैक, इट वाज स्टार्टेड बाय देम. इन्होंने स्टार्ट की है मूवमेंट, इन्होंने स्टार्ट की है. Okay. हाँ, Okay. और जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, दे ऑल हेट देम. आई मीन, यू नो, खुशवंत सिंह एंड एवरीबॉडी, मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, खुशवंत सिंह, ये सब जब गोल्ड टेम्पल पे अटैक हुआ था, तो यू नो दे प्रोटेस्टेड, दे रिटर्न देयर व्हाटएवर दे कुड, यू नो, थ्रू आउट इंडिया, और जितने जितने भी थे, बट दे डोंट सपोर्ट देम ईदर. सो जितने भी टॉप के, यू नो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, बिजनेसमैन, जितने भी हैं, पढ़े लिखे लोगों ने पता कि खालिस्तान इज जस्ट विशफुल स्टूपिड ड्रीम, यू नो, कुछ लोगों का, ज्यादा लोगों का नहीं. और मैं हमेशा यहाँ अमेरिका में रहता हूँ, मैं जब भी यहाँ अमेरिका या कनाडा के गुरुद्वारे में आता हूँ, तो आई गिव देम अ वेरी नाइस आइडिया. मैं कहता हूँ, इतने पैसे हैं तुम्हारे पास, पैसे इकट्ठे करो, हमारे ये हॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स हैं, ये कोई खरीद लेते हैं आइलैंड खरीद कर उसको खालिस्तान बना दो. समटाइम्स बैक हमारे एक दोस्त हैं, वो कहते थे उन्होंने मेटावर्स में खालिस्तान बना लिया. चले, लेट्स मूव अहेड विद द डिस्कशन. सिट, आई थिंक यू हैड अ पॉइंट, आप बोले. हाँ, या नहीं, पॉइंट नहीं, क्वेश्चन था. दरअसल आई एम एक्चुअली अनेबल टू कनेक्ट सम पॉइंट्स. संदीप भाई ने एक बहुत ही specific point बताया था in regards to the Jats and why they are in power and why as a tribe खालिस्तानी movement. संदीप भाई ने कहा कि ये एक जट्टों की मूवमेंट है. मैंने इसकी रीजनिंग पूछी, उन्होंने कहा कि जट्टों की उस रीजन के अंदर ज़मीनें काफ़ी हैं और दे आर इन पावर बिकॉज ऑफ दैट. ठीक है. मुझे जहाँ तक मैंने देखा है, जिन लोगों की ज़मीनें होती हैं जो ज़मींदारी करते हैं, दे आर वेल ऑफ पीपल. जमींदार जो है वो अच्छा खासा घर में रहन रिवाज उनका होता है, दे आर वेल ऑफ. आम तौर पे ऐसा होता है कि जो लोग वेल ऑफ होते हैं वो एजुकेटेड होते हैं, उनका रहन सहन होता है, उनका जो सा रीति रिवाज जो सा वो बहुत सोफिस्टिकेटेड होता है. दे डोंट रिजॉर्ट टू अब्यूजेस क्योंकि वो पढ़े लिखे होते हैं. दूसरी साइड पे ये ऑब्जर्व किया जा रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ द, और संदीप भाई ने जिस तरह कहा कि खालिस्तानी मूवमेंट स्टार्ट ही अनएजुकेटेड लोगों से हुई थी, ये गंवार लोगों से हुई थी. तो क्या वजह है? एक तरफ आपके पास जमींदार है, आपका रहन सहन ठीक है, आपके घर के अंदर दाना पानी पूरा है, तो व्हाई आर दे अनएजुकेटेड? वो गंवार क्यों है? इसकी क्या वजह है? मुझे ये कनेक्शन मुझे समझ में नहीं आया. For like Shaji just joined back. I think I should give him some feedback No, on no, what no. we All I was discussed. saying. Shaji, you have to listen to this. So I asked a question to Sandeep ji. Okay, like when we talk to Khalistanis, most of them are hooligans. ठीक है, right now. ठीक है, जितना हमारा interaction हुआ है, and they are not very educated because education का element Sandeep ji brought in, and he categorically said कि भाई वो movement hijack नहीं हुई, क्योंकि I told him कि मुझे लगता है movement hijack हो गया by uneducated people, and he said the movement was basically started by uneducated people. So that was something that we discussed when you were not here. So yeah, go ahead, Shaji. But the thing is, then you've got elements like Gurneek Singh, New Zealand upgrade, Virsa Radio Wale Log, and when you listen to them, they seem to be relatively very much educated, and they don't endorse the likes of Pannu and whatnot and all these people, but they also are inherently come again like part and parcel proponents and people of the same community. So I can understand what you're saying is that in recent times, the elements who we've seen, they've been pretty vile, and they seem to be the main representatives at this time.
but we cannot say the entire community is that way, or the entire movement consists of just radical elements as per se. I don't know what your opinions on that is, but that's just how नहीं, I लेकिन see it. शाहजी जिस तरह संदीप भाई ने कहा है कि जो एजुकेटेड सिख हैं वो तो इनको पसंद ही नहीं करते, और इन्होंने बताया कि he has lived through it and he has actually met Bhindranwala and has had talks with him and has been threatened by him as well in real life. ये बता रहे हैं वो उस वक्त हाँ, भी लेकिन गया अगर हम और भिंडरा आज भी वाले को गया। खुद को देखें तो भिंडरा वाले was a relatively educated man. If you look at his background and the way he Okay, came. okay. I think we should go to Sandeep ji. We are talking on his behalf. He's here. Sandeep ji, go ahead. भिंडरावाला was not educated. He was, like I said, आपने बताया कि जमीन ज्यादा होती है जट्टों की, well off होते हैं, so what happened because of the land sealing act, जहाँ पे एक फैमिली 20 एकड़ से ज्यादा जमीन रख नहीं सकती, ओवर द टाइम लैंड लोगों की कम हो गई हैं, परिवार बढ़ गए हैं, 4-4, 5-5 किले रह गए हैं लोगों के पास, so they have no other option but to do something else. सेकंड के भिंडरावाला तो संदीप जी, हिंसा जब में आप फंस कहते गया, हैं, मेरा आपसे क्वेश्चन है, भाई थे। when you state कि भिंडरावाला was not an educated person, how would you say that? जितना मैंने पढ़ा है, he was somebody who was very closely involved to the Sikh clergy, और उनके अंदर at a time he was considered to be an emerging scholar of theology within those ranks, और There is no इसी such वजह thing. से उसकी at a young age इतनी आवभगत हुई थी. Is that not true? No, it's not true. Listen, Pindrawala himself was from a very poor family, 5 brothers. So his parents sent him to, you can call a Sikh seminary, in a village called Pindrawala, where he lived. Those people basically brought him up and they taught him whatever he could. He never went to any high school or college. So he only knew whatever Damdami Taksal taught him. Damdami Taksal is a place where there are many schools like just like in Pakistan, there are many schools like here in India too. So basically, they teach how to sing Gurbani, how to read Guru Granth Sahib, two or three things. There is no such thing as a law in Sikhism. Law का part तो जो सरकार है वही चलेगा. और and Sikh theology is not like no, there's no such thing as Sikh theology, I can say. क्योंकि जितने भी गुरुओं ने कहा कि हम गुरु ग्रंथ साहब आपको दिया इसलिए कि खुद पढ़ो इसे, किसी की बात मत सुनो, किसी से सुन के अपने आप को ना करो, ठीक है. और जो लोग सुन के करते थे, और ये तो आप इस तरह बता रहे हैं जिस तरह यहाँ इस पंजाब वाली साइड पे एक फिनोमिना नजर आता है कि घर का जो सबसे बेकार बच्चा होता है उसको मदरसे में भेज देते हैं. तो आप कह रहे हैं भिंडरावाला जो सा घर का सबसे बेकार बच्चा था तो उसको कहा कि चलो यार तुम हमारे रिसोर्सेज ना खाओ, तुम जाके बैठ जाओ वहाँ पे. Yeah, but I would like to be fair. I've heard Bhindrawala's speeches and stuff like that. Not that I agree with what he did, or a lot of other things where you can disagree, but you can't call him an uneducated or a dumb guy. He was very much a brilliant orator, and he knew what he was talking about. And that is why he became so vocal. Indira Gandhi or the politicians of the time, कांग्रेस को जो लीड कर रहे थे, वो बेवकूफ तो नहीं थे कि वो उसको चूज करते, या आज तक किसी बंदे का नाम रह गया है, आप उसको बहुत क्लियरली एक डिमवेट या एक जाहिल कहते हैं. That does not do justice. That applies to Osama bin Laden as well. If somebody was to say Osama bin Laden was an uneducated dumb guy, you're living under delusion. Neither was Hitler a bad guy. अब मैं इवल लोगों के साथ भिंडरावाले को नहीं कंपेयर कर रहा, मैं यहाँ पे ये चीज पॉइंट आउट कर रहा हूँ. इवन इवल पीपल कैन बी वेरी एजुकेटेड. नो नहीं, आप शाहजी उसकी ओरेशन के ऊपर बात कर रहे हैं. अगर फिर हम बात करते हैं अपब्रिंगिंग की और उसके कैरेक्टर की, तो संदीप भाई फिर उसके ऊपर ज्यादा बता सकते हैं बिकॉज ही पर्सनली मेट हिम.
So Sandeep bhai, how exactly was he? which is हाँ तो fine, and I respect his opinion. तो आगे maybe I have a different perception, लेकिन क्या और बोले? generally in Sikh seminaries, what people do is they take they do something, high school करके या बैचलर्स करके उसके बाद सिख स्कूलों में जाते हैं जो 1-2 साल के लिए होती है पढ़ाई। कोई ऐसा नहीं होता कि बचपन से, और कोई कोई बहुत ही कम ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे बचपन से बच्चों को ले लेते हैं कि तुम आए हो हमारे साथ रहो। सो जो 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 सिखों के स्कूल भी हैं, जैसे सिख मिशनरी कॉलेज लुधियाना में, 3 साल की पढ़ाई है उनकी बस। पहले साल में आपको म्यूजिक सिखाते हैं, दूसरे साल में गुरु ग्रंथ साहब कैसे पढ़ना सिखाते हैं, तीसरे साल में कैसे whatever is left. So it's तो संदीप भाई, मेरे ख्याल से हम एक कंक्लूसिव रूम तक जा रहे हैं। तो आपके रिमार्क्स क्या होंगे खालिस्तान के बारे में, उसकी फ्यूचर के बारे में? आपको क्या लगता है, मिथ और रियलिटी, क्या सिनेरियो आपकी नज़र में है? और सिख विद इन द सिख कम्युनिटी करंटली खालिस्तान को लेके क्या मेजॉरिटी एजेंसी है सोचती है? मेजोरिटी तो 90%, 95% नहीं चाहते खालिस्तान, 90 to 95% नहीं चाहते। जैसे मैं पहले ही बता रहा था, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, कोई बेंगलोर में रह रहा है, कोई हैदराबाद में रह रहा है, फ्रॉम पंजाब, जो भी पढ़ लिखे या कोई कनाडा चला जाता है, अमेरिका चला जाता है। तो पंजाब में तो वैसे ये मूवमेंट खत्म हो चुकी है। राइट नाउ देयर इज नो सच मूवमेंट इन पंजाब। ठीक है, जितने भी खालिस्तानी है हमें न्यूजीलैंड, कनाडा, इंग्लैंड, यूएसए में ही मिलेंगे। और ये वही हैं लोग जो 80s में भाग के आ गए थे, आगे उनके बच्चे हैं। जो तो कोई पढ़ लिख जाते हैं बच्चे, वो ठीक है, देर उन्हें समझ लग गई है कि ये इसमें कोई फायदा नहीं, और वी हैव टू डू समथिंग एल्स। बाकी आई थिंक इट्स अ मिथ, इट्स जस्ट अ फिक्शनल मिथ। कोई नो सब्सटेंस इन इट, कोई ऐसी कोई बात ही नहीं है। आई मीन, आप ऐसे मैंने पहले कह रहा था, in this age who wants a landlocked country between 3 nuclear power? हमने अब सोचो, ना तुम्हारे पास कोई कोयला है, ना सोना है, ना गैस है, ना तेल है, सिर्फ जमीन है और पानी है थोड़ा, और वो पानी भी बाहर के स्टेट से आता है, अंदर से निकल के दूसरी स्टेट में चला जाता है। I mean, just look at geography. लेकिन I completely agree with you, और इस पे मेरे final comments यही होंगे, we're going towards a close, कि at the end of the day पाकिस्तान टेम्परेरली एक सेंटिमेंट ज़रूर रख सकता है, पाकिस्तानी स्टेट रख सकती है। Very nicely pointed out by Dr. Israr in the 90s, जिस टाइम के ऊपर पहले ये मूवमेंट जोर पकड़ी थी। एक टेम्परेरी बेस के ऊपर ज़रूर पाकिस्तान सपोर्ट कर सकता है खालिस्तान के बनने को। और दूसरा, लेकिन अगर कभी खालिस्तान बन गया, all the majority of the religious areas and religious stuff and the Khalsa Raj to truly come into existence from the time period which these people have incepted, वो आने के लिए पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक हिस्सा खालिस्तान का पार्ट बनना पड़ेगा। एंड अगर इंडिया से वो सेपरेट होने में मैनेज कर जाते हैं, तो यही मेरी तरफ से इसका कंक्लूजन भी है कि इंडिया विल बी द फर्स्ट सपोर्टर्स ऑफ खालिस्तान ट्राइंग टू एक्वायर लैंड फ्रॉम पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान रियलाइजेस दैट। एक तसल की हद तक, एक बैंटरिंग की हद तक देयर कैन बी दिस सपोर्ट फॉर खालिस्तान, बट इनहेरेंटली द पाकिस्तानी स्टेट कभी भी खालिस्तान को सपोर्ट नहीं कर सकती on a truly fundamental basis, because that will not be within their interest whatsoever. To have a state trying to get into you backed by India in the future, having said that, would basically mean chaos.
And Khalistan, if it ever came into existence, even though it would be a loss to India, but after that loss, it would become an immediate buffer state, which they can use to garner further things, which again is one of the reasons why in the 90s, at the time of Benazir Bhutto, the Pakistani establishment and Benazir Bhutto decided that they are going to give the names of every Khalistani activist which they have, in terms of where they acquire money, what their addresses are, how they were backed, and that has happened in the past. And this was the primary reason. And it shall occur again if a similar situation was to build up. That's my 2 cents on that. So I would conclude neither it's in benefit of India or Pakistan to have a state of Khalistan which is independent. It's not beneficial for them. I Thank mean, you. I'll tell you one more. एक और आपको बताता हूँ. You know who गंगा सिंह ढिल्लों is? नाम सुना है कभी गंगा सिंह ढिल्लों? कभी सुना आपने नाम? नहीं जी मैंने नहीं सुना थोड़ा सा नहीं सुना. डिटेल Well, basically he was a British citizen, Britain में रह रहा था. तो उसके पास आफ्टर 71 वॉर उसके पास क्या नाम बेनजीर भुट्टो के पिताजी का क्या नाम था? जुल्फी भुट्टो. उसने अपनी सरियाब इंटरव्यूज में कहा, किताब में लिखा कि जुल्फी भुट्टो हमारे पास आए इन लंदन में, हमसे कहा ये लो ननकाना साहब की चाबियां, आप अपने मूवमेंट स्टार्ट करो. तो बेसिकली वहां से गंगा सिंह ढिल्लों इज द वन 76 77 पे उसने शुरू किया. उसने जैसे ही गोल्डन टेम्पल पे अटैक हुआ उसने डिक्लेयर कर दिया मैं 1 करोड़ रुपया दूंगा जो इंदिरा गांधी को मारेगा. समथिंग लाइक दैट किया उसने, बड़ा कुछ किया. बाद में 95 में वो इंडिया भी आ गया. इंडिया आके इलेक्शन भी लड़े उसने, इलेक्शन में हार भी गया. सो सही. आई गेट योर पॉइंट. तो किसी और के पास कोई फाइनल कमेंट्स हैं तो आप बताएं. आई गिवन माय कंक्लूजन. आई थिंक संदीप जी इज गिवन हिज एज वेल. कोई है तो बताएं. जी शाहजी, just a very small comment. Let them dream about a land of meadows, green meadows, and dragons and fairies and unicorns, and let us do our own work. जो कर रहे हैं ये दो countries, हम struggle कर रहे हैं. They are prospering right now. Let us do what we are doing and let them dream about whatever they are dreaming about. They won't find anything more than just dreaming, I think. With the current leadership they have, the current supporters they have, I feel disgusted when I talk to people who support this movement. That's my conclusion, Shaji. Well, I've had the same experience, but I would like to quickly reiterate there might be some decent people within those communities as well. We just haven't come across them. This was one of the reasons why we did these forums. In regards to this, we wanted to speak to the community because there was a time, and for a great number of reasons, there have been Pakistanis who've been supporting them. And we wanted to know, where is that love? Love is supposed to be, respect is supposed to be mutual. If you do not respect our religion, if you do not respect us as people, at least the people representing you haven't been able to do that, then how do you expect that to be reciprocated? It's exactly the same situation with Hindus as you have with Muslims. And I think with growing interaction, some people from within the community, the Sikh community, as well as the Khalistani community, need to come forward. Decent people need to speak, have those conversations, and make sure that such people do not represent their community. People who are basically telling Hindus to go back to India because now Canada or United States belongs to them. You're brown, yourself, my friend. So at the end of the day, these are some of the considerations which need to be made. And then maybe we can understand that Khalistan is a movement or not. Right now, it's not in favor of Pakistan, and it's definitely not in favor of India. So is there anything else someone needs to add? Shaji, I think we need to thank all the panelists for the series of live rooms we did, because these hooligans have
sent a lot of threats. A, B, they have attacked a lot of people, putting out their personal information, attacking their families, abusing them, and Well, again, this that's a has been a segment pattern. of those people. We don't know exactly what level of representation or power they carry within those ranks. But with that, I yes, I agree agree, with but the experience which we had. And some of those rules yeah. and information will be uploaded on our YouTube channel, where we had a Mhm. series of debates with the Khalistanis and about Yeah, but Khalistan. Shaji, the point is like the panelists, they have mostly been attacked by fringe elements. Okay, I'll call them fringe elements, but they have been attacked. So No, no, I I would like to understand. thank them. Yeah, I would like to thank them to come up here and show their faces and talk about such issue. So thank you to all of them, including Karan. I think Karan showed up in most of our rooms, and I think we need to thank him. And So we're Sid basically and going to Guys, Shaji. move away I from would this like, subject now, hopefully. yeah, I, And the coming I would rooms. like to end this subject. Yeah, Shaji, I would like to end this subject and the stream with a Punjabi poetry. I think that would be a classical conclusion to it. ਬੇਅਦਬਾਂ ਨੂੰ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਝੋਲੀ ਪਾ ਸਮਝਾਈਏ ਗਈ ਜਵਾਨੀ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਲੱਖ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਾਈਏ ਉਡਦੇ ਪੰਛੀ ਟਿਕ ਨਾ ਪੈਂਦੇ ਬੋਰੀਆਂ ਬਾਜਰਾ ਪਾਈਏ this is the dream that they're dreaming and it's never going to come true and with that I would like to end this stream. Yeah. Goodbye, Okay. ladies Okay, and Medusa, you wanted to say give something? me a minute. Acha, guys, like and subscribe and follow up for the videos in future. Thank you for coming. Thank you for listening, and do join us for a conversation. We respect all kind of conversation. We all respect all kind of opinion. You can be against us. You can be on our side. You can be complete coming from a completely different angle. We don't care. Just join us and speak your mind. Our channel at the end of the day is all about the truth and everything beyond narrative. Thank you so much. Bye. Thank you.